Yeah, hi. Good afternoon, guys. I'm sorry that I'm forcing you to attend the class today, but I think it's necessary. I know that even I'm missing the match, but let's study for few hours, just the 2 hours and 2.5 hour at max. Okay, then we can disperse and you can enjoy the match. Okay. So I guarantee you guys that today's class is going to be worth it. Okay. So we'll be closing the BST. We'll be doing a couple of questions and and we'll be discussing the contest. Like how many of you feel that you performed well in the contest? Let me know in the chat. बोले मैंने तेरी Which question you found difficult, guys? Okay. Most of the people solved two questions, if I'm not wrong, right? Bit manipulation, you might be feeling because just a second. Yeah, sure, guys. No worries. Okay, we can discuss. Let's more students join. We'll start in 2 minutes. I'll discuss the questions. I will discuss the answers, and then we can discuss the remaining topics.
Okay, guys, I think we should start. This will be the maximum, maximum strength that we'll be getting, right? So Akash says he's forgetting the previous topics. Okay, so that is how that is what tend to happen, Akash. Okay, no one can remember everything. Okay, it's completely normal. Okay, but the more you practice, you just go back and try to practice the questions. Okay, so do such things. Okay, and like after some point you will be feeling more confident about it. Okay, so that will be there anyway. Okay, like you will be forgetting the things in an exponential manner. Okay, uh, but it's fine. Okay, now you guys are learning the concepts, right? So at some part, like at least 30% will be written in your brain, and I'm just expecting only that 30% to be present, not more than that. If you're capable of retaining 30% of the concept, okay, then you're good to go in module D, where you'll be practicing a lot. Okay, and that 30% will be giving you all the 100% back. Okay, so it's fine, it's completely fine. Okay, nice, right? So let's discuss one by one. Okay, this is the question. How many of you felt that this question is little tricky or difficult? Faiz, I think driver code इसको एक बार click करो तो मिल जाता है ना यार. Starting में किसी को नहीं रहेगा. Like if you reload this, like I told this in multiple times in the class, you won't be having the driver code. But if you click on Java again, then you will be getting the driver code. Have you tried this thing? Right. So, that's correct. Okay. So यहाँ पे they said that height of the binary tree in terms of edges, right? So I told you some people refer the edges as the height, and some people refer the nodes as the height. I told you this thing, right? So you should be careful, extra careful when it comes to height. What do they mean by height, right? Correct, guys. Are you listening? Okay, 50 per people, so you guys can be free. Okay, you guys can be more expressive. Okay, so we can have a more interactive lecture than ever today. Okay, I'm expecting that from you guys. So okay, let me just write it down. Okay, so it says that height of a BT, मतलब binary tree, as edges, है ना? Edges as the height. So if you consider a tree like this, okay, so what is the height of this tree? It is 2, right? According to the notes. But if you see that, if you see the edges, it is just 1 less than that, correct? So if you have another node like this 4, you can see that height is 3 according to the nodes, right? But according to the edges, it is just 1 less than that. Do you guys agree? Guys, right? So like just calculate for the maximum nodes. Okay, so just calculate for the maximum nodes. की कैसे करोगे? 1 plus math dot max of height to whatever it is, right? Root dot left, comma root dot right. है कि नहीं? I'm sorry. यहाँ पे height वापस आएगा. Root dot right. Correct. So whatever is maximum value, okay, out of these two, you will be getting that and you will be adding it. Okay, adding because you're considering this as another node. So this will return height of edges of nodes. And at the end, you just need to do -1. Kyun? Guys, we did this question, right? We did this question on nodes, right? Now they're asking for the edges. And what do you think is the difference between them? It's just small difference. I told you exactly yesterday, right? Ki you are not expected to write a different whole algorithm. Like you're not expected to be such genius, right? You're not expected to be a child prodigy. Okay. The only thing you're expected to do is
द नोन एल्गोरिथम्स का थोड़ा ट्वीक करके, मतलब थोड़ा चेंज करके, छोटा सा चेंज करके, ठीक है, छोटा सा चेंज करके उसको आंसर फाइनल की तरह, फाइनल आंसर की तरह दिखाना. दैट इज व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू. डू यू गाइस एग्री विद दैट स्टेटमेंट? हेलो, right? You can witness that in this question, right? To the people who didn't do it, okay, what was going in your mind when you didn't do it? Do let me know so that I can know you guys better. क्या चल रहा था तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन जो भी नहीं कर पाया? कोई है जो नहीं कर पाया? It's fine, you can tell me. ठीक है, I won't judge you. I'll appreciate अगर तुम आगे आके बोले तो, so that I can identify better. Is there anyone who didn't do this problem? Hope everyone did it. ठीक है. So like, I did it. I do it in a different way, but it's wrong. Okay. हाँ, don't subtract -1, ठीक है. So you won't be calculating the height the normal way. मतलब height तो नोट्स के हिसाब से कैलकुलेट करोगे, उसके बाद फाइनल आंसर में जब रिटर्न करने वाले होते हैं ना, तब तुम मतलब फाइनली इन द मेन फंक्शन जब तुम हाइट नोट जब पास करोगे, पूरा ये नोट्स के हिसाब से देगा, उसके बाद -1 करोगे. Are you guys able to do it? या क्यू के हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है, बट इट इज अगेन लेंथी ना, लिटिल लेंथी है वो थोड़ा, राइट? Return, you can't return that, Preeti. Okay, how can you do that? Like, Preeti is saying ki you without +1 you're doing it. You can't do that. Okay, if you're doing it for every call, it will happen the same thing. So last में 0 0 0 everywhere 0 written होगा ना. तो ये +1 add करके you're adding one node to the final answer. Correct. So you should do this thing. Okay. So it's the same thing which you guys learned. Okay. So if root is equals to null, return 0. है ना. उसके बाद this is the statement, return 1 plus math.max of height of root dot left and height of root dot right. मतलब यहाँ से you will be getting 1 because 1 plus 0, right? यहाँ से you will be getting 2. How you will be getting 2? यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 2, sorry, यहाँ से 3 आएगा ना, right? So यहाँ से 2 आएगा, right? So दोनों में से maximum +1, that is 3, correct? So दोनों में से maximum you will be taking, right? 3 plus 1, that is 4. So for this answer you will be getting 4 as the answer, right? This is the longest path. लेकिन 4 - 1 return करोगे क्योंकि it is the edges that you're talking about. Agreed? So we are just supposed to return an integer that is returning the height, guys. है ना? What to do if we have to find minimum? Shubh, did you attend the class in which I discussed about the minimum height? Like we discussed it in very deep manner. Okay. So were you there, Shubh? Okay. So, so in that, what I told is, if at all you have a node like this, okay, you can't simply, like if you can't simply say maximum of minimum of left or right. You can't say that because यहाँ पे null है. But minimum is defined in such a way that you will be going from root to leaf node, है ना? So only then it is called a minimum height, right? So this is not a leaf node, right? So you should be going to a leaf node. Only then you will be returning. ठीक है? So you just see कि left null है या right null है. कौन सा null नहीं है, ठीक है? According to that, ठीक है? अगर जो भी null है, you won't make a call there. So I explained that in a great manner. ठीक है? एक बार वहाँ पे एक बार देख लेना. To give you a gist of this, it is simple that if you don't have any node at this area, you won't make a call because it will give you a 0 value, it will give you 1 value. Obviously 0 is less than 1, so you'll do +1 to 0 and you'll be returning that answer, but which is not the case. Okay, so अगर null है तुम उस पर call ही नहीं करो, correct? And if it's a leaf node, right, then you will be returning 1 from it. Right, guys? Correct? Is this making sense? Right? So this question is basically the height of the binary tree based on the nodes
फिर at the end you will just subtract 1 because the number of edges connecting those nodes is n minus 1. ठीक है, correct? Okay, no worries guys. Attend the class, we have discussed that. ठीक है, sure. एक बार देख लेना, right? एक बार हमारा मॉड्यूल डॉक में जाओ और मॉड्यूल नोट्स वाला जो डॉक में जाना और when did I paste that solution वो देखना, ठीक है? उस दिन चले जाना and you will be finding that recording. ठीक है? Let me just see कहाँ पे पढ़ाए थे. Minimum depth of the binary tree, right? So it is on 21st. ठीक है? Go to 21st lecture and you will be finding it. ठीक है? तो चलो next question पे चलते हैं. So I hope everyone is clear with this solution, or do you want me to code it? Hello, right? So देखो यहाँ पे तुम यहाँ पे like where is the solution? यहाँ पे object of root dot height है ना, you will be doing -1 here. That is the only difference. यहाँ पे -1 करोगे, बस यही difference है. You will be calculating the height in normal way, but यहाँ पे तुम -1 करोगे. Do you guys agree? ये समझ में आ गया ना? This is the main function, right? तो यहाँ पे the number of test cases are being called, tree is made, उसके बाद object का solution बना, उसके बाद object dot height, मतलब इसका this is being called, correct? This method is being called. This method will basically take a node and he will return what is the height of the tree, correct? In terms of nodes, right? But at the end you will be doing -1 to it, correct? Guys, है कि नहीं? Chirag, if you return buffer reader, like जैसे तुम लोग system, like the way you do the scanner, right? So I'll take, like if you want, I'll give you a discussion on buffer reader. ठीक है? It's basically a reader which is which doesn't use any, like it uses, मतलब अभी के लिए ऐसे समझ लो कि it is taking an input, ठीक है? जैसे हमारा scanner करता है वैसे करता है ये, but it won't parse anything. It will just take the line and completely give it. You need to parse it later. That is the difference. Correct? हाँ रोहन, you can create another function also, it's fine. ठीक है? You can create another helper function as well. It is completely fine. ठीक है? यहाँ पे helper function बना लो. ठीक है? उसका -1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं. या तुम इसको यूज कर लो और -1 कर लो. Cool? Any doubts? What if we return -1 instead of returning 0? Chirag, what will happen man if you return -1? ठीक है? तो एक वैल्यू कम मिलेगा, है ना? लाइक एक बार सोचो क्या होने वाला है. ठीक है? अगर एक ही नोड है, ठीक है, if there's only one node, what you will be getting? You should be getting 0 as the answer, right? What is the height of this tree according to this question? Chirag, नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि what should be the height, लेकिन according to your code -1 रिटर्न करोगे तो -1 आएगा ना इसका height. या तो वही है ना, मतलब लाइक योर अप्रोच इज करेक्ट. ठीक है? यहाँ पे रहोगे तो अगर तुम -1 करा तो यहाँ पे 1 आएगा, राइट? सो -1 यू विल बी गेटिंग 0, राइट? सो तो हमेशा मुझे लगता है कि 0 ही रिटर्न करना चाहिए. ठीक है? एट द एंड 0 रिटर्न करो, जैसे लीफ नोड आएगा, ठीक है, यू विल बी फाइंडिंग द आंसर्स. ठीक है? So I think it's based on your implementation. I didn't see your implementation, so I might not be exactly getting you. But the point is, कि if you're just finding the nodes height based on just the nodes, ठीक है? When you encounter a leaf node, make sure you're returning 1. ठीक है? But if you're encountering a null value, ठीक है, and null value return करते हुए, ठीक है, if you're returning -1, it means that यहाँ पे 1 हो रहा है, तो you'll be returning 0. ठीक है? So even that is fine, to be honest. Correct? Even that is fine. तो तुम काफी सारे तरीके हैं, right? So like whenever you encounter null, you can return -1 so that यहाँ पे 0 होएगा.
right? So if at all this guy returns 0 and this guy will take it, ठीक है, यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से -1 आएगा, right? So he will take 0 and he'll put 1 to it. So edges ही तो count हो रहा है इसमें भी, correct? You can do this as well. This is another way, right? So it's all in the implementation, man. Like there is no difference in the time complexity, ठीक है? मैं ये बोल रहा हूँ कि to the people who didn't understand, यहाँ पे रूट नल आते ही you return -1 instead of 0. तो एक वैल्यू कम होके मिलेगा ना, क्यों? हेलो, सो उस केस में क्या होने वाला है, 1 प्लस math of max of -1 comma -1 if at all there's only one node, okay, you'll be getting 0 as the answer which you want. You can do it in that way as well, right? So just explore. There are multiple ways to do a particular question. Just explore, keep exploring, okay? So it's great that you guys are getting those ideas and I'm happy for that, okay? So then sum of leaves हम discuss करते हैं, क्यों? Sum of leaves is nothing but if at all it's a leaf node, return that data. If at all it's not a leaf node, return whatever is the leaf node, okay? For example, if you want me to take देखो sum of leaf nodes है, you have this particular tree, ठीक है, you have this particular tree, ठीक है? So you are at this position, this you will be just checking कि if this guy, ठीक है, is a leaf node or not, ठीक है? If not, ठीक है, you'll be making two calls, one on the left and the one on the right. You'll be adding them up and returning it, ठीक है? So left call पे किया, यहाँ पे you'll be getting 2 as the answer, you'll be returning 2, ठीक है? So यहाँ पे कॉल करता हूँ, ठीक है? Even this guy is not a leaf node, so he will make two calls. One is this guy, ठीक है? He will return 4, ठीक है? Now this guy will also be called, he will return 5. 4 plus 5 will be 9, right? So 9 plus 2 is 11, right? Just look at it, 11 answer. How this is working? For every node you just check if it is a leaf node or not. Leaf node या नहीं कैसे चेक करोगे? अगर दोनों लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड दोनों ही नल है, ठीक है, in that case you will be returning 0, correct? Sorry, you will be returning that value, है ना? तुम देखो, like अगर नहीं है, ठीक है, अगर वो लीफ नोड नहीं है, ठीक है, तो just return whatever the sum of leaf nodes from its left child, मतलब from the left subtree plus sum of all the nodes from right subtree, correct? So you are just checking if it's a leaf node. देखो यहाँ पे ये leaf node नहीं है, so whatever is the sum that you found from the left right subtree, whatever is the sum you found from the right left subtree, दोनों का sum होगा ना तुम्हारा आंसर, क्योंकि at the end तुम्हें sum of leaf nodes ही तो find करना है. So मैं assume कर रहा हूँ कि this guy will work and give me what is the sum of all the leaf nodes from the left subtree, what is the sum of all the leaf nodes from the right subtree, ठीक है, दोनों को sum करो and return करो. बस यहाँ पे एक और चेक करना पड़ेगा कि फ्रूट इज इक्वल टू नल, रिटर्न 0, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि दिस ओनली वन चाइल्ड, है ना? यहाँ पे तो समझ लो एक ही चाइल्ड है, ठीक है? इन दैट केस दिस गाय विल बी कॉलिंग नल एंड इट विल बी 0, ठीक है? दिस गाय विल बी कॉलिंग हियर एंड इट विल बी 6 एंड एट द एंड 0 plus 6 you should be returning 6, correct? Guys, is this making sense? Yeah, what is that? Sorry guys, I had to go out. I'm sorry. So yeah, so I'm telling, see, if it is a leaf node, return that value. If it is a not a leaf node, return whatever is the sum of leaf nodes from the left subtree and whatever is the sum of leaf nodes from the right subtree, correct?
राइट? तो वही है, लाइक पॉइंट वही पे आ जाता है कि लाइक हाउ यू आर यूजिंग द रिकर्शन वेल, राइट? सो यू आर एज्यूमिंग दिस विल वर्क एंड दिस विल रिटर्न, ठीक है, यू कैन रिटर्न इट, ठीक है. If you feel that it is the leaf node, then you can return that value, and everywhere you will be just summing up them, right? If at all it's not a leaf node, it is just summing up from left and right, okay, and you will be passing it on, okay. So if you want to look at the, like, just try to make it, okay, line number A, B, C, D, E, ठीक है, कैसे कॉल हो रहा है? लाइन नंबर ए में रूट नल है कि नहीं चेक कर रहा हूँ, राइट है. लाइन नंबर बी में रिटर्न 0 कर रहा हूँ. लाइन नंबर सी में लीफ नोड है कि नहीं चेक करूंगा, ठीक है, एंड रिटर्न वैल्यू, ठीक है. लाइन नंबर डी में क्या कर रहा हूँ, लाइक सम ऑफ लेफ्ट, सम ऑफ राइट, ठीक है. तो वही है, लेकिन फिर से लीफ नोड यू विल बी रिटर्निंग, लेकिन लीफ नोड नहीं है, देन दिस गाय विल बी कॉलिंग द लीफ सब ट्री, ठीक है. दिस गाय माइट बी कॉलिंग वन मोर, दिस गाय माइट बी कॉलिंग वन मोर, ठीक है, आफ्टर दिस इज एंडेड, ठीक है. यू विल बी रिटर्निंग देम, दोनों का सम करके तुम वापस यहाँ पे भेजोगे, ठीक है. तो या ये बंदा विल बी कॉलिंग अनदर गाय, ठीक है, ही माइट बी कॉलिंग अनदर गाय, ही माइट बी कॉलिंग अनदर गाय, राइट? इफ एट ऑल ही इज ओवर, अनदर वन, राइट? इफ ही इज ऑल, ही इज आल्सो ओवर, he will also return some value, he will also return some value, ठीक है. दोनों का सम करके he will be returning some value, राइट? तो ये दोनों का सम करके you will be returning it. So are you getting how कहाँ पे वैल्यू रिटर्न हो रहा है and how it is passing to the top, ठीक है. ट्राई टू मेक दिस डायग्राम जो मैंने सिखाया था, ठीक है. तुम खुद से एक रफ नोट लो, ठीक है, जिसमें या नोट्स लो जिसमें तुम ये चीज ट्रेस कर पा रहे हो ना. you guys have actually realized how the recursion is working, ठीक है. ये ट्राई करो, ठीक है. डू दिस थिंग, ठीक है. इट्स नॉट ऑलवेज कि यू विल बी कोड लिखते वक्त यू एज्यूम कि द फंक्शन इज वर्किंग, है ना. कोड लिखते वक्त यू एज्यूम कि if I call it for the smaller problem, it will work, right? But मैं ये बोल रहा हूँ कि if, ठीक है, if you are calling uh, like मतलब while writing the code you will be assuming कि this is working, ठीक है, and you will be writing the code कि how it is working, you will be writing the recurrence relation, यहाँ पे recurrence relation ये है ना. लेकिन you should realize how it is working step by step. You should be realizing कि stack का size क्या होने वाला है. This is the stack का size ना, this is stack का opening, right? This will be on the bottommost element, this will be another element that will be put on it, ठीक है. After this will be popped, this will be put, right? You should realize this thing. ये एक नोट्स में लिख के ट्राई करो, हर एक लाइन को ट्रेस करो कि ये किसको कॉल करेगा, ये किसको कॉल करेगा, ये क्या रिटर्न करेगा, राइट? अगर ये लीफ नोड है तो ये रिटर्न करेगा, दोनों का सम करेगा एंड ही विल बी रिटर्निंग, राइट? इन द सेम वे, लाइक यहाँ पे भी सब सम होके यू विल बी गेटिंग ओनली द लीफ नोड्स का वैल्यूज एंड यू विल बी समिंग देम अप, करेक्ट गाइस? सम ऑफ लेफ्ट लीफ नोड्स, काफी लोग पूछ रहे हैं ये चीज, ठीक है. तो विल डिस्कस दैट, ठीक है. क्वेश्चन क्या है? तो ये चीज समझ में आ गया सबको? विल गो देयर, क्या ये चीज समझ में आई सबको? राइट, ठीक है. सो ट्रेस दिस थिंग गाइस, ट्रेस द कॉल्स, ट्रेस द रिकर्शन कॉल्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. मतलब if you are able to do it, you actually understood the implementation, ठीक है. So if you are not able to do it, ठीक है, तो थोड़ा मेहनत लगाओ, ठीक है. दिस इज अ लिटिल बिट वर्क दैट यू नीड टू डू, ठीक है. ये मॉड्यूल 1 का थिंग है ना, रिकर्शन, राइट? सो अभी यू विल बी एक्चुअली यूजिंग इट, ठीक है. वहां पे यू जस्ट लर्नड इट, ठीक है, as a tool. Now it is, like, you will be using it in the applications, right? So trees में recursion is very important, ठीक है. So trace these calls, write it in your diagram, ठीक है, write it in your book, and it is very important, correct? Correct guys? recursion तो सीखो ही सीखो, ये चीज ट्रेस करना सीखो, सबसे इंपॉर्टेंट है. ऐसे करो, लाइंस लिखो, like my students used to do it, like they used to write it and they used to post it in the discord कि ये मेरा recursive call देखो, like for everything, for the merge sort, ठीक है, for the quick sort कैसे काम कर रहा है, उसका कॉम्प्लेक्स रिकर्शंस लिखते थे पेजेस तक, 2-3 पेजेस तक कैसे काम कर रहा है. how one uh, how this array is being divided into 2 arrays and how it is being merged, ठीक है. मतलब ये तो डायग्राम में मैं ऐसे दिखा पा रहा हूँ, राइट? लेकिन एक्चुअल इंटरनल ट्रेसेस कैसे हो रहा है, how it is being called as
how it is called with this time complexity or space complexity, correct? Okay, shall we move forward, guys? Now comes your favorite question, bit manipulation wala. Okay, before that, you guys are asking me for the left subtree, na? Left guy, na? Left leaf nodes, na? यार दैट इज वेरी मतलब थोड़ा बहुत ट्रिकी है बस, ठीक है, बट ट्राई करना हो जाएगा वो। लाइक कंसीडर इट एज योर हॉलीडे होमवर्क, ठीक है, दिवाली होमवर्क समझ लो, ठीक है। यहाँ पे दिया था आई गेस, नॉट श्योर इफ आई पेस्टेड इट और नॉट। ये रहा, राइट, कंसीडर इट एज योर दिवाली होमवर्क। आई कैन गिव यू अ हिंट, ठीक है। हाँ मिल गया, थैंक्स गाइस, ठीक है। आई कैन गिव यू हिंट, यहाँ पे बस लेफ्ट लीव्स का पूछा था, है ना। बस लेफ्ट लीव्स मतलब इस बंदे को कभी पूछना ही नहीं है, लाइक दिस गाय शुड नेवर बी कंसल्टेड। बस देखो एट एनी पॉइंट अगर लेफ्ट नल नहीं है तो रिटर्न दैट, ठीक है। मतलब वहां से यू जस्ट मेक द सेम कॉल, ठीक है। मतलब इस पॉइंट पे रह के ये देखो कि ये लीफ नोड है कि नहीं, ठीक है, रिटर्न दैट। अगर नहीं है, अगर है तो रिटर्न दैट, एंड ऑल्सो रिटर्न वॉट एवर यूर गेटिंग इन दिस राइट सब ट्री, ठीक है। राइट सब ट्री में सेम कॉल, ठीक है। यूल बी जस्ट चेकिंग इफ इट इज अ लीफ नोड और नॉट, यूल रिटर्न इट। कैसे चेक करोगे? रूट डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू नल, and root dot left dot right is equals to null. See this, root dot left is this value, इसका left null है कि नहीं, इसका right null है कि नहीं। अगर दोनों null है, ठीक है, then this is a leaf node, so make it return the value of, then return root dot left। ऐसे करो guys, root dot left dot value, ठीक है। वरना call it on the right function, और right function में कुछ है कि नहीं देखने बोलो। In that way you keep on summing it up and you sum all these things। हाँ 20 is a right value, I agree, ठीक है, but it is having a left leaf node, right? So they never said that you should never go to right subtree. They just said that देखो this is a left leaf node, this is a right leaf node, all left leaf nodes का आंसर पूछ रहा बस। देखो यहाँ पे भी 19 plus 15 क्या है, 24 है ना। हेलो, दिस इज अ लेफ्ट लीफ नोड एंड दिस इज अ राइट लीफ नोड, दोनों में से लेफ्ट लीफ नोड चूज करने बोला है कि नहीं, करेक्ट गाइस? चले आगे, राइट। तो लाइक अंडरस्टैंड इट एज एन एग्जांपल, ठीक है। कोई नहीं, लाइक थोड़ा मेहनत करो इस पे, ठीक है। लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन, टॉगल ऑल इवन बिट्स। अच्छा कितने लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं कर पाए, ये वाला क्वेश्चन नहीं कर पाए, सम ऑफ लीफ नोड्स? ये तो हमने डिस्कस किया, तो करना चाहिए, है ना गाइस? हेलो, राइट। So what about this question? How many of you face the difficulty in this question? Okay Chirag, we'll do that, ठीक है। How did you do this question? देखो यार टॉगल बिट्स पूरा बॉयलर कोड मिल गया हमको, इसी को पॉपुलेट करना है बस, है ना, ठीक है। So how do we do it, ठीक है। What is the question? Can anyone, like Chirag, can you unmute yourself and volunteer in solving this question? Raise your hand, bro. We'll discuss it. We'll discuss your approaches as well, ठीक है। कंटिन्यूअसली मैं नहीं बोलूंगा, तुम लोग से बोलवाऊंगा थोड़ा, है ना। हाँ चिराग। हेलो, हाय हाय। हाय सर। एक्चुअली सर फर्स्टली मैंने जो इनपुट दिया था इसकी बाइनरीज को काउंट किया था। क्वेश्चन क्या है बताओ, पहले क्वेश्चन क्या बताओ। टॉगल और इवन बिट्स का मतलब ये है कि इसमें हमें जो इवन नंबर पे जो भी बिट दे रखी है उसको लाइक जोर करना है। जोर नहीं, टॉगल करना है, मतलब फ्लिप करना है। हाँ सॉरी, फ्लिप करना है लाइक। तो मैंने सर इसमें अप्रोच ये लगाई थी कि मैंने इनपुट में 10 जैसे लिया है, तो मैंने पहले उसके बाइनरीज को काउंट किया था कि वो कितनी बाइनरी है, मतलब लाइक मतलब काउंट किया था उनको। फिर मैंने उतना लूप लगा दिया था, फिर एंडिंग से मैंने मास्क को लेके
उनको जो इवन पोजीशंस पे थे उनको टॉगल कर दिया था। देखो इवन पोजीशंस पे ये है ना। सो व्हाट यू सेइंग इज कि एनी नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का इवन पोजीशंस को फ्लिप करना है, करेक्ट चिराग? यस सर, यस सर। दिस इज ऑड पोजीशन है ना, दिस इज ऑड पोजीशन, these both are even positions, right? Agreed? यस सर। तो फ्लिप करना मतलब 1 है तो 0 बनाओ, ठीक है, 0 है तो 1 बनाओ, है कि नहीं? यस सर। तो अगर समझ लो you have some value like this 1 0 1, ठीक है, what are the even position? This is the even position, correct? यस सर। So you need to flip it. So what will happen? ठीक है, ऑड को तुम छुओगे नहीं, ऑड को वैसे रहने दोगे, इसको फ्लिप करोगे मतलब 1 हो गया, ठीक है, ऑड को कुछ नहीं करोगे, इवन को फ्लिप करोगे, ऑड को कुछ नहीं करोगे, इवन को फ्लिप करोगे, सॉरी इवन ऑड को कुछ नहीं करोगे, राइट? सो दिस इज Yes, द sir. आंसर। डू यू गाइस एग्री? हेलो एवरीवन, राइट? दैट इज द क्वेश्चन, राइट? तो अब फ्लिप कैसे करेंगे? आई टोल्ड यू, राइट? कोई भी नंबर को ए के साथ जोर करो तो फ्लिप हो जाता है, देखो ए के साथ जोर के फ्लिप हो गया, ठीक है, सॉरी ये क्या कर दिया, हाँ 1 जोर 1, 1 के साथ जोर किया तो वापस फ्लिप हो गया, करेक्ट? डू यू गाइस एग्री? राइट? तो मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा मास्क बनाना है जो ओनली इवन नंबर्स पर सेट है, मतलब इट इज गोइंग टू बी 0 1 0 1 0 1 0 1, ऐसे एक मास्क बनाना होगा और इस मास्क को इस नंबर के साथ जोर करना होगा। ये सब समझ में आ रहा है? लाइक वी विल डिस्कस द एग्जैक्ट स्टेप्स, बट इज दिस थिंग क्लियर फॉर यू? ओके ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस। मोहित सेज कि 0 सॉरी 0x ए यूज करने के लिए, है ना, 8 A's, करेक्ट? सो माय क्वेश्चन टू यू मोहित, ठीक है, कि व्हाट डज दिस मास्क रिटर्न? इट विल रिटर्न 0 1 0 1, right? This is for A, first A, 0 1 0 1. So this guy basically returns a mask. Look, let me write it in the PPT so that you guys can refer it later. Yeah, Chirag, be on the unmute, man. We'll discuss. ठीक है, don't worry. ठीक है, तो ये जो है it will return, देखो A का A मतलब 10 है ना, तो it will be returning something like this. This A will be returning something like this. This A will be returning something like this. This A will be returning something like this, right? So this particular number will produce a mask where all even bits are set for 32 bits, for all 32 bits, guys, all 32 bits के लिए सेट होगा। अभी देखो हमारे एग्जांपल में क्या दिया है, 10 दिया है इनपुट और आउटपुट दिया है 0। इसका मतलब क्या हो रहा है कि देखो 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, राइट? सो तुम ये मानते हो कि यहाँ पे भी 0 से सब? डू यू गाइस एग्री? राइट? तो इफ आई वांट टू फ्लिप ऑल द इवन बिट्स, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, राइट? लेकिन ये भी तो 1 होना चाहिए इफ आई हैड डन समथिंग। तो उसके हिसाब से ये 0 नहीं आना चाहिए, सम अदर बिग वैल्यू होगा ना गाइस? डू यू एग्री विद दिस थिंग? आउटपुट तो ये आना चाहिए, आउटपुट इज दिस if I flipped all the even bits till 32 bits, सारे 32 बिट्स को फ्लिप करोगे, ठीक है, तब ये आएगा आउटपुट, है ना? लेकिन हमारा आउटपुट 0 है, इसका मतलब जहां तक वैल्यू है, ठीक है, जहां तक लास्ट वैल्यू 1 होता है वहां तक ही हो रहा है। डू यू गाइस एग्री विद दैट? दैट इज द होल पॉइंट, ठीक है? मतलब कोई बोलता कि सब फ्लिप कर दो, ठीक है, यू कांट डू वंस कॉम्प्लीमेंट एवरी टाइम, बिकॉज वंस कॉम्प्लीमेंट विल do it for all the 32 bits, ठीक है, but you are limited only to yourself till where it is not
1, करेक्ट है ना? हेलो हेलो। हाँ मोहित, सॉरी चिराग, यस सर। बोलो। नहीं, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं किया सर। अच्छा, तुम्हें ये चीज तो समझ में आ गई ना कि like you should be only flipping till where it is 1, यस सर। so you can't use this particular thing, we can't use it. ये चीज तो समझ में आ गई? It's not a straightforward question, correct? यस सर, बट सर ये डाउट मेरा नहीं था, ये डाउट हाँ मोहित का था। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई भी, लाइक ओके मोहित का अनम्यूट कर लो, ठीक है, ओके नो वरीज। हेलो सर। हाय हाय मोहित, बोलो। सर मुझे ना जैसे हमने इसको 10 के मार्क्स के साथ वो कराते हैं जोर। हम्म तो सर जैसे 0 का 0 0 ही आएगा, 1 का 1 0 आएगा, 0 0 1 एंड अगेन। तो सर ये तो टोटल 0 आएगा ना, तो आउटपुट तो 0 आया हमारा, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ तो सर ये ऐसे नहीं कर सकते बस मार्क्स बना के 10 का मार्क्स बना के और फिर 10 के साथ जोर का दो, तो 10 का ऐसे मास कैसे बनाओगे? ओ ए ये जो ऊपर बना है ओ एक्स ए हाँ ए तो ए ए अरे ब्रो, देखो प्रॉब्लम या वही है ना कि दिस गाय विल प्रोड्यूस द इवन बिट्स टिल 32 बिट्स, मतलब ये बहुत लंबा है, लाइक फॉर ऑल द 32 बिट्स कर रहा है। डू यू एग्री मोहित? यस सर। तो बट इफ सर यू, मेरा इसका 10 के लिए तो आंसर करेक्ट आ रहा है। मैंने कैसे ये आएगा करा 10 के लिए, कैसा आएगा? 10 के लिए 10 की वो लिखिए आप बिट्स इसके नीचे, हम्म इसके ऊपर ऊपर इसके नीचे जो अभी आपने जोर डिक्लेयर करा है। हाँ इसके हाँ 10 की बिट्स लिखिए इसके नीचे। यहाँ पे, हाँ नीचे लिख दीजिए अच्छा 10 का बिट्स लिख दिया, ठीक है। 1010 लिखिए आप। हाँ फिर, फिर बस अभी से जोर कराइए, 0 का 0 0 जोर 0 होगा, 1 1 का जोर 0 होगा, हाँ 0 का ठीक है। 0 यहाँ 0। पे देखो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 हो रहा है ना। देखो द प्रॉब्लम विद दिस मास्क इज ही विल फ्लिप ऑल द बिट्स ऑफ द 32 बिट्स, लेकिन मुझे ऑल द बिट्स फ्लिप करना ही नहीं है, मुझे जहां तक 1 है वहां तक फ्लिप करना है। डू यू गाइस एग्री? या सर है ना, ये मुझे फ्लिप नहीं करना है, वही तो बता रहे हैं मुझे आउटपुट। क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं मेंशन होगा ये चीज, देखते हैं एक बार। टास्क ऑल द इवन बिट्स ऑफ द नंबर, ठीक है ठीक है। तो इसमें यहाँ पे नहीं दिया प्रॉपरली, बट यहाँ पे ये बोला कि 30 बिट्स तक नहीं करना चाहिए, ये तो ऑब्वियस है ना। तो सर हम इसे लूप लगा के कर सकते हैं क्या? तो बात मैंने तो ऐसी इसे है, सुनो बात या ऐसी है कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट कि यू शुड बी यूजिंग अ मास्क that is only limited to wherever this bits are set. Do you agree? या Right? So I should be, what I should be doing is I should be creating a mask till, like I should definitely create a mask like this, okay? I should be creating a mask like this, okay? Mask in which even bits are set, and I should use that mask to XOR this value. लेकिन वो मास्क को मुझे क्रिएट करना है बेस्ड ऑन यस दिस वैल्यू, है ना, मतलब हर एक नंबर के लिए मेरा मास्क डिफरेंट होगा। एग्री करते हो ये ओके बात सर। पे? और सर मुझे ना ये डाउट है कि ओ एक्स जो हमने ये मार्क्स बनाया ओ एक्स 8A, तो ये तो 0x, नेगेटिव हाँ मार्क्स होगा ना? नेगेटिव, हाँ नेगेटिव होगा तो, बिकॉज लास्ट हाँ मॉक। नेगेटिव होगा, एग्री। और हाँ बस यही पूछना था क्योंकि मैं हम्म, कर रहा था तो ये नेगेटिव में आंसर दे रहा था मेरा। हाँ तो मास्क नेगेटिव है, ठीक है, एग्री। ये सर बस यही पूछना था। तो मास्क का नेगेटिव वैल्यू में जाता है, ठीक है, आई एग्री, लेकिन बिट रिप्रेजेंटेशन तो क्लियर है तुम्हारा कि इवन बिट्स होंगे, करेक्ट। यस सर तो यस। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि हाउ टू क्रिएट दैट मास्क, द मास्क, है ना। सो मास्क दैट दैट in which even bits are set, है ना, wherever the even bits are set till the number, till that number only, ठीक है, उसके आगे नहीं, है कि नहीं गाइस? यस राइट। सो I'm just saying कि how do we do it, ठीक है, how do we do it, ठीक है। सो लाइक सोचो यार कैसे करें इसको, बताओ कुछ आइडियाज। ठीक है, you guys know how to create a mask, right? Like mask को, if you do mask equals to mask or, ठीक है, some bit, ठीक है, some bit like 1 count,
if you're able to do it. मतलब you are just setting that particular bit in that mask. Do you understand this? Setting the count bit in mask variable. Guys, do you agree with this statement? Any doubt in this statement? Everyone? किसी को समझ नहीं आई है ना? It's like कि एक mask है, उसमें I'm taking that mask and doing OR with some bit that is set at a count position. What is this? This is nothing but कि at a count position, अगर count 0 है तो मतलब ये होने वाला है, मतलब पूरा सब zeros होंगे फिर 1 होगा. Count 1 है तो it is going to be something like this. Count 2 है, it is going to be something like this. Guys, count 0 है, count 1 है, right? Count 2 है, correct? So I'm just using this guy and doing OR with it. OR का मतलब है कि I'm setting that bit. We have discussed this many times, right? अगर मेरा कोई नंबर है ऐसा ऐसा कुछ कुछ, ठीक है, if I want to set this value, what I'll do is I'll just get a mask that is nothing but 1 shifted 2 times, ठीक है, and let me do OR, ठीक है, OR करूंगा तो सेम ऐसे ही बनेगा लेकिन यहाँ पे सेट हो जाएगा बिट. So this value is converted to this value. This is like setting that bit. Correct? Guys, any doubts in this? Yes sir. हाँ बोलो. सर मार्क्स हमारा क्या होगा इसका? मार्क्स मास्क तो पहले इनिशियली 0 होगा. फर्स्ट ओके. नाउ उसके बाद तुम काउंट को ऐसे बढ़ाओ कि काउंट हमेशा इवन होगा. और कब तक होगा? जब तक that value है. तो that constraint is different. I'm just asking about this particular statement कि how you're setting the bits. Is that clear? Yes. Okay. सर उसको लेफ्ट साइड ऑफ काउंट को इंक्रीज करते रहेंगे. ठीक है. सो देखो सिंपल, देखो अजय एक और मेथड बताया लेकिन ठीक है, इट्स कूल. लाइक वी आर जस्ट यूजिंग अ मास्क एंड ज़ोरिंग इट एट द एंड. हमारा आइडिया ये है कि आंसर जो आएगा, मास्क जो बनेगा उसके साथ ज़ोर करना है ना. अजय एक और मेथड बता रहा है, बस ये देख रहा है कि हर एक बिट पे जाओ, उसको सेट करो, अनसेट करो, ऐसे कर रहा है. ठीक है, you can do that also. ठीक है, but this is like that is another approach. ठीक है, but let's discuss this first and then let's go there. So again the question arises कि how do we create this mask, है ना? तो उसके लिए मुझे ऐसे करना पड़ेगा कि कोई ऐसे काउंट वेरिएबल भी लूंगा जो 0 है, ठीक है, and I'll update that count variable every time. ठीक है, for example let me take a for loop and let me take value of I is equals to n. ठीक है, n is the value that you got, right? And जब तक I greater than 0 है and I को मैं लेफ्ट राइट शिफ्ट कर रहा हूँ, right? So I'll just write something like this, है ना? So देखो इसके बारे में एक और 0 रख दो, right? So you are just dividing this guy I, ठीक है, in such a way that, ठीक है, you're right shifting this in such a way that, ठीक है, you are just moving, ठीक है, मतलब जो भी हमारा वैल्यू है उसको मैं बाई 2 कर रहा हूँ, मतलब इट विल बिकम लाइक दिस 101. इसको वापस 10 कर रहा हूँ, इसको बाद 0 कर रहा हूँ. यू आर जस्ट राइट शिफ्टिंग इट. करेक्ट गाइस? हेलो? राइट, सो यू आर जस्ट राइट शिफ्टिंग इट. आई को, आई इज इनिशियली n, तो राइट शिफ्ट कर रहा हूँ. तो यहाँ पे, ठीक है, आई एम जस्ट चेकिंग, सी this thing got ended, this became 0, ठीक है, in 4 steps, right? So I want to go 4 steps only, right? काउंट यहाँ तक ही चलाना ना मुझे. तो exactly जैसे 0 हो जाएगा I can end this. So this loop will run for 4 times because 4 bits है. So that many number of times ही मुझे करना भी है, ठीक है. तो मुझे I'll just maintain this count की count is equals to is even or not. If it is even, ठीक है, then set that mask, वरना don't do anything. काउंट प्लस प्लस करो at every point. बस यही है कोड मास्क बनाने के लिए. देखो यार, कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, कोई भी नंबर, ये वाला नंबर लो, ठीक है. दिस लूप विल रन फॉर 5 टाइम्स फॉर दिस बिट नंबर. डू यू एग्री गाइस? ये 5 टाइम्स चलेगा.
Hello, right? Because it will become 1101, it will become 110, it will become 11, it will become 1, उसके बाद it will become 0. तो 0 होते ब्रेक कर रहा हूँ, राइट? तो ये 5 बार चलेगा क्योंकि 5 बिट है, ठीक है? तो ये 5 बार मैं इसको चलाऊंगा और काउंट को भी बढ़ाऊंगा, ठीक है? इनिशियली काउंट का वैल्यू 0 होगा तो ये नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम काउंट का वैल्यू 1 होने वाला है. एट दैट मोमेंट आई एम सेटिंग द मास्क. करेक्ट? Agreed, guys? Anyone? Mohit, any doubt? Chirag, No, any sir. doubt? Clear. राइट? तो मास्क बन गया हमारा. तो एट द एंड हम बस रिटर्न करेंगे मास्क को एन विद द मास्क. ये कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा ये चीज, बस यही है. सो दिस इज अबाउट जनरेशन ऑफ द मास्क. ठीक है, कोई ये भी बोल रहा है we have to update mask if count is odd. No, we don't have to update ना. That is what I'm saying. Why do you need to update the count? अगर count 0 है तो उसको update क्यों करना है? Count odd number है, we don't have to update it. We will only set the bits at even positions. Guys, do you agree with this question? किसी को कोई भी डाउट हो अभी पूछो, लाइक अभी अनम्यूट कर लो और अभी पूछ लो, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? देयर आर मल्टीपल थिंग्स हियर. वन इज फ्लिपिंग द बिट्स, जो हम कर चुके हैं, राइट? लेकिन हम 32 बिट का मास्क लिए, लेकिन यहाँ पे हम लिमिटेड वे में मास्क ले रहे हैं, बस वही डिफरेंस है, ठीक है? समवन इज रेजिंग द हैंड, आई थिंक लेट मी अनम्यूट हिम. सर हेलो. हाँ, हाय. सर सर मेरी आवाज़ आ रही है सर? आवाज आ रही है, बोलो. सर मेरा ये क्वेश्चन ये है सर कि सर चूंकि कोई भी नंबर सर तो 32 बिट में रिप्रेजेंट होता है ना सर. माइक थोड़ा दूर है ब्रो, तो थोड़ा पास लो ना माइक. अच्छा, आ रही सर आवाज़? हाँ, बोलो. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन एवरी नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज 32 बिट सर. हाँ, तो फॉर लूप में तो सर हमारा वो तो 32 बिट के लिए फिर जाएगा, तो हम लोग अगर अगर वो आपका मास्क जनरेटर होगा तो सर वो ऑल 32 बिट के लिए होगा या फिर ओनली जो नहीं नहीं होगा ना. मास्क के लिए? देखो मैं कहाँ रोक रहा हूँ. जैसे ही i इज ग्रेटर देन 0, मतलब पहले i n से स्टार्ट कर रहा हूँ, इस वैल्यू से स्टार्ट कर रहा हूँ, और n मतलब i को फिर डिवाइड करते जा रहा हूँ, बाई टू करते जा रहा हूँ, ठीक है? तो ये 5 बार ही तो चलेगा. देखो वही तो बोल रहा हूँ, जहां तक लास्ट 1 बिट है वहां तक ही तो चलेगा ये लूप. इट वोंट रन टिल 32 बिट्स. एक बार देखो इसको, डिवाइड है ना ये, लाइक इट्स लाइक मूविंग, राइट शिफ्टिंग इट. तो देखो ये वैल्यू बन जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी, ये वैल्यू 0 बन जाएगा. 0 बनते ही हम रोक देंगे. तो 5 ही तो स्टेप हुआ है. ये एक स्टेप हुआ, ये एक स्टेप हुआ, ये एक स्टेप हुआ, ये एक स्टेप हुआ, ये एक स्टेप हुआ. तो 5 ही तो काउंट मुझे चाहिए, और उसमें जो जो इवन काउंट है आई एम सेटिंग द मास्क देयर. करेक्ट? अच्छा सर, इसमें हम लोग ये ऑड इवन फ्रॉम राइट लिए है ना सर? हाँ. फ्रॉम लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हम लोग काउंट करें ना सर, ऑड इवन. हाँ, सॉरी. वी आर कैलकुलेटिंग ऑड इवन फ्रॉम द लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ना सर? हाँ हाँ, करेक्ट. एलएसबी से काउंट कर रहा है ना. एलएसबी का पहला वैल्यू 0 है, उसके बाद 1 हो गया, मतलब नेक्स्ट बिट 2 हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा ना. करेक्ट? यस यस, थैंक यू. Right? Is this making sense, guys? Any doubts? Any doubts are appreciated. कोई भी, ठीक है? तो उसके बाद मैं मास्क बन गया, मेरा मास्क ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है? 1 0 10 के लिए ऐसे बनेगा. अगर बड़ा नंबर है, अगर ऐसे कोई नंबर है, ठीक है, कोई भी और नंबर ऐसा है, ठीक है, उसके लिए भी ऐसे ही बनने वाला नंबर. इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस. इवन बिट्स पे इट विल बी सेट, ठीक है? क्योंकि मैं काउंट जब भी इवन हो रहा है, ठीक, काउंट जब भी इवन हो रहा है, आई एम मेकिंग द मास्क सेट at that particular position, right? At that particular position पे सेट करने के लिए 1 को लेफ्ट शिफ्ट किया, काउंट टाइम बटा, तो मैं आई एम जस्ट सेटिंग दैट बिट एट दैट पोजीशन, है ना? एग्रीड गाइस? हेलो. Any doubts, guys?
या मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, एक बार इसके बारे में सोचो यार, थोड़ा सोचो एक बार कि जैसे मैंने दिखाया था, आई थिंक समवन हैज जस्ट पॉइंटेड दिस थिंग आउट, ठीक है, आई कैन शिफ्ट दिस मेनी नंबर ऑफ टाइम्स एंड जैसे सेम कर रहा हूँ वैसे करूंगा, काउंट अगर इवन है एट दैट पोजीशन, क्या मैं n को जोर कर सकता हूँ क्या उस पोजीशन पे? हाउ अबाउट दिस थिंग गाइस, इज दिस थिंग वर्क, विल दिस थिंग वर्क? I am just, whenever the count is 0, whenever the count is even, ठीक है, राइट? एक सेकंड, इवन होना चाहिए ऑड होना चाहिए? एक सेकंड, आई थिंक आई एम मेकिंग सम मिस्टेक यहाँ पे। सी दिस थिंग, इनिशियली काउंट 0 था, तो 0 पे तो दिस गाय शुड बी सेट, राइट? सो डू यू थिंक 0 पे सेट होना चाहिए? इट शुड बी 1 ना, यहाँ पे 1 होना चाहिए ना, एक बार सोचो। इफ इट इज, देखो यहाँ पे इनिशियली 0 होगा, राइट? सो 0 पे नहीं करना है ना, आई शुड बी डूइंग इट फ्रॉम दिस बिट, राइट? Right, at 1 bit, from 1 bit I should be doing, right? I overlooked this guys, you guys didn't point it out as well. जब दूसरा एग्जांपल लिया तब आया था दिमाग में, ऑड पे आना चाहिए ना, करेक्ट? ठीक है, you see it, यहाँ मुझे ये बिट सेट चाहिए ना, सिमिलरली मुझे ये बिट सेट चाहिए ना, ठीक है, काउंट इक्वल्स टू 3 चाहिए ना सेट, करेक्ट? ऑड टाइम पे आई शुड बी पुटिंग, है ना? तो इस पॉइंट पे नहीं चाहिए, इस पॉइंट पे चाहिए, मतलब 1 पे चाहिए, इस पॉइंट पे नहीं चाहिए, इस पॉइंट पे चाहिए, मतलब 3 पे चाहिए। सो इफ एट ऑल इट इज गिविंग सम रिमाइंडर, देन आई विल बी सेटिंग इट, ठीक है, कूल, नो वरीज, छोटा सा चेंज है, ठीक है। आई एम सेइंग कैन आई डू दिस थिंग डायरेक्टली, हर एक बिट पे जाकर उसको फ्लिप कर दूं? तो कोई भी नंबर लो, ये 5 बार चलेगा लूप, और जब भी इस पॉइंट पे आएगा, यू आर जस्ट flipping that. I am wearing n, I'm not wearing n, I am wearing I बदल रहा है, ठीक है, this is I, n तो सेम है वैल्यू, करेक्ट? और इस बिट्स पे मैं इसको फ्लिप कर रहा हूँ, so it is going to be 0 0 0 0, correct guys? Any doubts now? So don't you think this is another good approach? Hello? हाँ, काउंट 1 ले लो, नो वरीज उदित, इनिशियली काउंट 1 ले लो, फिर अपडेट करते जाओ, लेकिन ये इस चीज का ध्यान देना कि काउंट जब 1 लोगे, ठीक है, तो 2 पे हो जाएगा, हाँ, इट विल वर्क, इट विल वर्क। सो 2 पे, 4 पे, 6 पे यू कैन पुट इट, बस मास्क कैसे बन रहा है वो सब देखो, राइट? सो डू यू गाइस एग्री कि दिस इज अनदर मेथड? गाइस आई एम नॉट गेटिंग द रिस्पांस, समझ नहीं आ रहा तो बताओ, वापस बोलेंगे, वापस डिस्कस करेंगे, दिस होल सेशन इज मेंट फॉर द डिस्कशन ओनली। कोई भी डाउट हो लेट मी नो। जोशना, एनी डाउट? व्हाट इज द मास्क फॉर ईच काउंट कंडीशन? ओके, I think someone has asked me the doubt. Can you unmute yourself, bro? Like we can discuss it. एक बार अच्छी तरह से डिस्कस कर लेंगे। हैंड रेज करो। See, just a second. Oh, sorry, I was mute. So I'm just saying कि you have this mask initially, right? So mask is 0, right? Everything is 0. So for example, this is n value, ठीक है? So doesn't matter what is n value. This loop will run for how many times? 7 number of times, correct? So जब पहली बार चलेगा तो ये पहला इनिशियल है,
फर्स्ट आइटरेशन में ये होने वाला है, राइट। तो सेकंड आइटरेशन में, ठीक है, आई एम गोइंग टू मेक दिस थिंग 1। डू यू गाइस एग्री? थर्ड आइटरेशन में मास का वैल्यू होगा सेम, क्योंकि काउंट यहाँ पे होगा एंड यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, राइट। फोर्थ आइटरेशन पे मास का वैल्यू होने वाला है, गाइस समझ में आ रहा है कि नहीं? फिफ्थ आइटरेशन पे मास का वैल्यू होने वाला है सेम, क्योंकि काउंट यहाँ पे है, राइट। सिक्स्थ आइटरेशन पे मास होगा 0 1 0 1 0 0। सेवेंथ आइटरेशन पे मास होगा सेम, बिकॉज काउंट यहाँ पे तो कुछ नहीं कर रहा हूं। तो क्या मैंने बना नहीं लिया मास्क को? अब इस मास्क को इसके साथ वो करो, जोर करो, ठीक है। तुम देख सकते हो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, राइट, एंड ये 1 है, राइट। दिस विल बी द आंसर। You successfully flipped the even bits. Have you seen that, guys? Now, any doubts? So Samshad saying कि if you're doing this, ठीक है, 2 का मतलब you're shifting this ना, so you will be shifting this one time. It will be this value. ठीक है, तुमको जिस तरह करना है, बस इस पर्टिकुलर वैल्यू पे, ठीक है, I want it to be set, बस ये बोल रहा हूँ। You can do it in that, Samshad Ansari, ठीक है। उस बिट पे मुझे सेट चाहिए, इवन बिट्स पे मुझे चाहिए। आगे बढ़े गाइस, राइट। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड हाउ द मास्क इज बीन क्रिएटेड ओनली टिल दिस पॉइंट, ठीक है। इसके आगे मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं 0x1 a ऐसे लेता ही जाऊंगा 8 days, then it will give me for all the 32 bits, which I don't want. I want to run a loop and I want to do it. So can you guys tell me what is the time complexity of this and space complexity of this approach? Hello? Time complexity and space complexity. Time complexity log n है, agree करते हो? Because you're running this loop for log n number of times, right? Right? So log n इसीलिए क्योंकि divide by 2 कर रहे हो, right? You're right shifting it, and जहां जैसे इस point cross करेगा, you're stopping it. So it is log n. Do you agree? Anyone? Abhishek, are you clear with this? क्यों log n है? And space complexity? Big of 1 है, because you're not using any extra space except the variables, right? Variables will be constant, right? Guys? सर Yeah, hi. सर log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे, एक बार बता सकते हो आप? हाँ, अरे यार log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसीलिए है, समझ लो n का वैल्यू ये है, ठीक है। तो लूप कितने बार चलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स। टाइम्स ना। कैसे किया Yes. तुमने ये चीज? तो सर जहां भी हमें ये 1 बिट का खत्म हो जाती है, वहां 0 हो जाएगा और लूप रुक जाएगा। तो हम ऐसे कर रहे हैं ना, i का वैल्यू को ऐसे चेंज कर रहे हैं ना ब्रो। डू यू एग्री? हाँ सर, यस सर। है ना, राइट शिफ्ट कर रहे हो ना तुम बेसिकली। हाँ सर, राइट शिफ्ट कर। बट सर Right. ये 7 टाइम्स चल रहा है और मैक्सिमम जो है ये 32 टाइम्स चल सकता है बस। हाँ, तो सर ये फिर 32 तो एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये तो वो कांस्टेंट मैक्सिमम टाइम है। नहीं, वो मैक्सिमम टाइम है। लॉग एन अभी छोटा है उससे, 32 से, क्योंकि लॉग एन का मैक्सिमम वैल्यू 32 हो सकता है। लॉग एन इसीलिए आया क्योंकि देखो लॉग एन बेसिकली कब आता है, व्हेन यू आर डिवाइडिंग द नंबर कॉन्स्टेंटली बाय 2, है ना, या बाय एनी नंबर, ठीक है। तो देखो लॉग एन इधर 7 स्टेप्स है, ओनली 7 स्टेप्स, लेकिन 32 विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लॉग एन, बिकॉज योर अगर इंटीजर है तो, है ना। अगर वो लॉन्ग नंबर दिया तो क्या करोगे? 64 मैक्सिमम होगा, है ना। तो बेसिकली like this is the exact time representation of the your algorithm, right? It's not that कि log n हमेशा constant से worst है, ठीक है। तुम्हें ऐसे देख के लग रहा होगा कि ये constant नहीं, it is varying, right? Time is varying, ठीक है। टाइम तुम देख सकते हो कि हमेशा सेम नहीं है, पर इनपुट डिफरेंट इनपुट। अगर मैं n को 2 लिया
2 मतलब 1 0, ये बस 2 स्टेप चलेगा, है दो कि नहीं? स्टेप चलेगा, ये तो हाँ। कांस्टेंट होगा। राइट, सो अगर ये बड़ा वाला वैल्यू लिया, दिस इज 6 है ना, ये 3 स्टेप चलेगा, सो दिस इज बेसिकली log n, because you are just counting the number of bits, that is how you will get log n, right? ओके। और सर मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू था उस टाइम पे, आपने हाइट वाला क्वेश्चन करा दिया क्या? हाइट वाला क्वेश्चन हो गया, हाँ। सर बस उसका एक रिव्यू, छोटा सा रिव्यू दे सकते हैं आप? अरे हाइट वाला क्वेश्चन कुछ नहीं है, लाइक इफ यू एक्चुअली कैलकुलेट द नंबर ऑफ नोट्स, ठीक है, हाइट मतलब नंबर ऑफ नोट्स होता है ना, राइट? इसका Height- नंबर ऑफ नोट्स कितना, हाइट कितना है इसका? हाइट इसका 1 2 3 है ना? 3। हाँ, नंबर ऑफ नोट्स कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है? 1 2 3 है कि वेट नहीं? सर, ये भी तो नोट्स है ना दोनों, जो 1 के लेफ्ट में हाइट हाइट आई एम टॉकिंग अबाउट हाइट, हाइट मतलब क्या? मैक्सिमम डेप्थ। मैक्सिमम डेप्थ। बट डेप्थ तक जाएंगे कैसे कि ये नल या फिर ये नल, हम ये चेक करेंगे ना कि लास्ट एलिमेंट पर कोई भी नल ना हो, मतलब राइट लेफ्ट ना हो। हाँ, I think- तो देखो, शायद हमने ये चीज डिस्कस किया था, मैक्सिमम लेफ्ट से जितना आता है मैक्सिमम राइट से आता है उसका +1 होगा करके, याद है? हाँ सर। तो वही सीन है, यू आर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ नोट्स दैट आर अकोमोडेटिंग टू द हाइट, है ना? यस। तो इसका मुझे एडजस्ट का चाहिए, तो मुझे -1 करना है मुझसे, बस इसका h का -1 करना है, बस यही आंसर, ओके सर। है ना? देखो, नंबर ऑफ नोट्स यूज करके हाइट फाइंड कर लो, उसका -1 करोगे तो एडजस्ट मिल जाएगा। एग्री? या एग्री। ठीक है, चलो। ओके, हाँ, नो अश्विनी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, अश्विनी इज सेइंग कि these are the even bits, ठीक है? Even bits are calculated from this is even bit and this is the even bit, ठीक है? These are odd bits, ठीक है? Odd bits मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ऐसे सोच ले, ठीक है? ओके, चलो गाइस, let's continue, ठीक है? I hope you guys did the questions, ठीक है? The questions are not to make you think, ठीक है? It's more towards doing the questions in the time constraint, ठीक है? To the people who did all the 3 questions, congrats, ठीक है? You did a great job, ठीक है? And to the people who did and tried and did 2 questions, it's fine, ठीक है? You guys are doing great, ठीक है? That is fine, ठीक है? But थोड़ा और मेहनत करो, ठीक है? थोड़ा सोचो कि हर चीज तुम्हारे, देखो ऐसे कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में आया जो मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं, ठीक है? इट इज हाउ यू एसिमुलेटेड इट वेल, ठीक है? कितना अच्छे से समझ में आया, कितना डिफरेंस लेके आया तुम्हारे में, बस वही मैटर करता है। एग्रीड? ठीक है, ऐसे कुछ है नहीं कि जो पढ़ाया नहीं वो आ गया, है ना? ऐसे कुछ है क्या? नो, राइट? करेक्ट, सो देयर इज नथिंग दैट इज मोर, ठीक है? इफ यू डोंट वांट टू यूज एनी मास्क, ठीक है, यू कैन डू दिस क्वेश्चन इन जस्ट एट एवरी बिट, सी हर बिट पे जा रहा हूं मैं, उसको फ्लिप कर रहा हूँ। क्या ये सही नहीं है? ये सही है भाई, ये एकदम सही है, तो मास्क की जरूरत भी नहीं है, राइट? So it is just that कि whatever I'm teaching, ठीक है, just take that to your heart, ठीक है? मतलब brain में नहीं, heart पे ले लो, ठीक है? So that you guys are actually connected to those topics, कि you are able to find that topics in everywhere, ठीक है? तो ऐसे कुछ है ही नहीं, like you can see in the context, तुम एग्जाम भी देने जाओगे ना, like अगर मॉड्यूल 3 से कुछ क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं जो मैं पढ़ाया नहीं, ठीक है? मतलब क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट, ठीक है? इसको तुमने कितना प्रैक्टिस किया, कितना समझा, ओनली दैट मैटर्स। ओके guys, this is clear? ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू, ठीक है? क्लास करते हैं यार, लेट्स डू दिस BST, ठीक है? उसके बाद एंजॉय कर लेना, तुम्हारा ब्रेक 3 दिन का ब्रेक है, ठीक है? सो लेट्स डू दिस थिंग, ठीक है? तुम लोग पूछ रहे थे इंसर्शन और डिलीशन का, विल बी डूइंग दैट टुडे। हाउ डू वी इंसर्ट इन अ BST? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? सो लेट मी रिमाइंड यू व्हाट इज एन BST। BST का मतलब है कि एनी नोड है,
उसका लेफ्ट सब ट्री में सब नोड्स कम होंगे, राइट? All the nodes will be less than that particular node, and all the nodes that are greater than the node will be in that right subtree. ठीक है? So like you can have 3 here, and I can have only 1 or 2 here. I can have 6 here, right? The same way यहाँ पे 4 रख सकता हूँ मैं, क्योंकि 4 is greater than 3, correct? तो यहाँ पे 10 हो सकता है and यहाँ पे 9 हो सकता है, right? If I ask you 5 कहाँ घुसाओगे, right? What you will be doing? You should be saying कि 5 should be यहाँ पे, right? It should be on the right side of this. Do you guys agree? Right? So मतलब देखो, basically मुझे like कोई भी नंबर if I want to insert it, ठीक है? For example, if I want to insert 7, ठीक है? I'm just taking a simpler example. ठीक है? Insert 7, ठीक है? How do I do it? ठीक है? I know that if I'm here, ठीक है? वापस iteration start करूंगा कि कहाँ insert करूंगा value को, right? So let us assume BST like already बनी हुई है, and let's assume it later कि बाद में कि scratch से कैसे बनाते हैं, ठीक है? But right now what I'm saying is कि oh shit यार, my god, I'll be back guys. I think there are some ants. I'll be back in 1 minute. Sorry guys, so there were some ants that came on, right? So I'm just saying कि we are talking about BST, right? So if I want to insert 7, how do I do it? ठीक है? अगर I am at this position 8, तो मुझे पक्का पता है कि 7 should be on the left side, correct? 8 का left side ही होगा. Do you guys agree? Hello? Right? So I'll be here, ठीक है? तो मैं देखूंगा ये 3 है, मतलब 3 से भी तो ज्यादा है, so it should be on the right part of the subtree, right guys? Right? So I'll be here, ठीक है? And I'm here and I'll see कि it should be right part of it, क्योंकि 7 is greater than 6, so it should be on the right subtree. Do you guys agree? Right? And I can see that right side null है, right? So I'll just create a node and I make this guy work it in this way. क्यों? Don't you think it's still a valid BST? Hello? Right? So I should make BST in such a way that even after I insert, it should be following all the properties. So what do you think it took to insert a value? First, I need to search that position and then insert it, right? Searching that position will take log n time in the best way, right? Because it's a, let's assume it's a balanced binary search tree, right? So it will take big of h, right? So what I'm basically doing, so for example, I want to insert another value. For example, give me a value, like I want to insert 5, ठीक है? Insert 5, ठीक है? और insert any other value, like कोई value 2, insert 2, है ना? Insert 2. So you will reach at this position. You know that 2 should be on the left part of the sub array, I mean of this BST. So you'll reach here, right? And you know that 2 is still less than 3, so you should be in the left part still. So you'll reach here, right? And at this position, ठीक है? At this position, ठीक है? You know that 2 should be on the right part, क्योंकि 2 is greater than 1, है ना? तुम्हें पता है ना, left side कम होता है compared to the root and right side ज्यादा होता है, right? So I should be inserting 2 to the right side. I can see that null है, so I'll just create a new node and make it return 2. Guys, correct? Ashish, is this understood? Hello? चलो स्टार्टिंग से करते हैं, चलो ट्री को स्टार्टिंग से बनाते हैं. तुम लोग नोट्स बताते जाओ. You guys give me the notes. Anyone, just unmute yourself. Ashish, you wanna volunteer? Hello, Ashish.
anyone just raise your hand. ठीक है, I'll unmute you and you guys volunteer. hand raise करो. तो मोहित कर रहा है, ठीक है, मोहित को दे देंगे. यस सर. हाँ बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ. सर इनिशिएशन कराना है 8 से लेकर लास्ट तक, ये बीएसटी जो दिया आपने, या नहीं, फिर अभी अभी हम नया बीएसटी बना रहा है. बताओ. ओके, नया बीएसटी 11. तो 11 बनाने के लिए पहले मेरे पास रूट ही नल है, ठीक है, तो मैं 11 बना दूंगा ऐसे ही. पे आ जाएगा. तो मैं एक कंडीशन लेकर रहा हूँ, इफ रूट इज इक्वल टू नल, ठीक है, मतलब जो भी रूट दिया था वो नल है, इसका मतलब तो मुझे ये सब सब नया से बनाना है ना. तो रूट इक्वल्स टू Yeah. न्यू नोड, जो भी की दिया हमने दैट हाँ की उसमें. एंड रिटर्न द रूट. डू यू गाइस एग्री? Yeah. यस यस सर. ठीक है, गॉट इट. आगे बताओ. अगेन 7. 7 करना है, तो यू विल Yes, रीच sir. एट दिस पोजीशन, ठीक है. यू विल सी दैट Root 7 पर इज सीधा. स्मॉलर देन 11, सो यू गो टू द Yeah. लेफ्ट नल है, सो यू लेफ्ट जाएंगे. 7 आ गया यहाँ पे. ओके बढ़िया. हम्म. एक और वैल्यू दो. 6. 6. You will again start at this position. ठीक है, you see that 6 is lesser than 11, so you'll go to left part. You see that 7 है, 7 से भी कम है, so you see left part. Left में you see that it is null, so you'll create another node here. So I can be sure that insertion always happens at leaf node. Do you guys agree? Guys? यस सर. आगे 9. कोई 9 करना है तुम्हें. देखो 9. 11 पे आया, 7 फिर मुझे पता Yes. चलता है कि 9 कम है, तो 7 पे आया. 7 से ज्यादा है तो यहाँ पे राइट पे जाता हूँ, तो राइट पे नल है, तो मैं ऐसे एक वैल्यू बना दिया. क्यों? डोंट यू गाइस एग्री दैट दिस इज फॉलोइंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बीएसटी, इवन दो इट इज अनबैलेंस्ड, बट कूल, इट इज वर्किंग, राइट? और एक और वैल्यू दो ब्रो. 32. हाँ? Anything 32 है. it's 32 यहाँ पे आओ तुम, यू कैन सी the दैट. next. हाँ, 32 will be something like this. Again 8. Yeah. Many of the people call 8 चाहिए. 8. ठीक है. Yeah. So you will be going here and you will be seeing कि 8 is less than 7, so you will be 8 is less than 11, you will be reaching here. 8 ज्यादा है उससे 7 से, so you will reach here, and 8 इससे कम है, so you will reach to the left part. 8 यहाँ पे होगा. Don't you think it's following all the properties? Sir, again इसमें duplicates value नहीं हो सकती. Again 7 नहीं, दिया. नहीं हो सकती ना. नहीं हो सकती. कैसे हो सकती? नहीं हो सकती. नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ऐसा हो सकता है क्या? Possible है. we are तो वो we are just talking about these trees, ठीक है. There is a complex data structure जो जिसके बारे में we are restraining ourselves, क्योंकि basic चीज पहले पता कर ले, right? तो देखो basically point क्या है, पूरा फंडा क्या है कि you are supposed to kind of you're supposed to find that particular value. If that value is not present, insert that value. Agreed? ठीक है. Yes. So let's talk about the iterative approach first. ठीक है, how do we do it? ठीक है, let me write an iterative version of the code. ठीक है. So the code is कि you'll be writing insert key, some value key. कोई पूछा iteratively कैसे करोगे? तो same चीज यार, I'll create a node n, and it is a node with the value key in it. ठीक है. तो इसके बाद सेम चीज की अगर रूट ही नल है, हाँ, तो रिटर्न करा दो n को. रिटर्न नहीं, मतलब रूट को n बना दो, है ना मोहित? एग्रीड? रूट में हाँ यार सर, रिटर्न भी मार दो. So you will just return from this function. It's an iterative, ठीक है, तो you don't have to return anything. अगेन चेक करेंगे कि डेटा, रूट का डेटा अगर हमारा n से लेस देन है तो हाँ, now है. right now, like after this thing, ठीक है, after this particular thing, we are sure that we have at least one node. Now search will happen, ठीक है. search कैसे करोगे? देखो मैं ये बोल रहा हूँ हमेशा कि अगर तुम्हें कोई वैल्यू इंसर्ट करना है, अगर समझ लो 10 इंसर्ट करना है, यू विल रीच हियर, ठीक है, एंड देन यू विल रीच हियर. तुम देखोगे कि यहाँ पे नल है, तो तुम्हें पीछे जाके प्रीवियस वैल्यू पे जाके प्रीवियस वैल्यू को असाइन करना पड़ेगा ना. प्रीवियस डॉट राइट इक्वल्स टू द न्यू नोड करके ना. आइटरेटिवली बोल रहा हूँ, राइट. तो मैं यहाँ पे नल पे पहले पहुंचूंगा. मैं पीछे आने के लिए I don't have any mechanism, so I need to use one more variable to point to the previous node. Do you agree, bro? Yes sir. So I'll just maintain a temp variable which will be moving one after the other.
यार okay, no worries, I'll pick up this call later. ठीक है, so see this, I'll be using a temp variable, ठीक है, which will be moving in this way, ठीक है, and I'll be maintaining another previous variable which will be moving one step behind the temp, ठीक है, so that जैसे temp null हो गया तो ये Yeah. बंदा जाके उस null पे point कर, like I'll create a node and he'll put a 10 here. Do you agree Yes, sir, I agree. guys? बस तो वही करो, कंटिन्यू, ठीक है, तो मैं एक temp variable करूंगा while temp is not equals to null, है ना, so while temp is not equals to null, what you'll do is I'll keep on iterating. How I'll be iterating? If temp dot value is greater than the key, I need to go to right part, क्योंकि sorry temp dot value is greater than the key, तो I need to go to left right. key मतलब जो वैल्यू हम इंसर्ट करने वाले हैं, और temp का जो वैल्यू है वो हमसे बड़ा है, राइट, तो मुझे लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा. Declare temp. हाँ, I'll declare आपने temp. temp को declare नहीं किया था. हाँ, कर दूंगा, अभी कर दूंगा, नॉट अ बिग डील. ठीक है, temp equals to root initially, ठीक है, and Yeah. previous equals to null initially, ठीक है, so same thing, ठीक है, so I'll just store whatever the temp value is, maybe temp null हो सकता है, right, तो temp को temp equals to temp dot left कर दिया. Yes. Agreed, guys? In the else condition, I'll be doing previous equals to temp and temp equals to temp dot right. बस हो गया हमारा कोड, मतलब at least we found out कि क्या है, how is this done, ठीक है, the moment temp will become null, ठीक है, बस हो गया. अभी मैं previous का वैल्यू देखूंगा कि राइट जाके वो temp null हो गया, राइट जाके null हो गया. if previous dot value is greater than the value, ठीक है, मतलब previous जो वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू ग्रेटर देन है हमारे से, तो मैं लेफ्ट की तरफ पॉइंट करूंगा ना, तो prev डॉट लेफ्ट इक्वल्स टू नोड इक्वल्स टू n, else prev dot right equals to n. बस हो गया. This will be the last code. Don't you think this code will work, guys? क्योंकि देखो, like I'm using a temp variable, ठीक है, कोई भी 10 वैल्यू है, अगर मुझे 9 चाहिए तो मैं previous will be null and temp will be this value, तो मुझे 9 करना है पॉइंट, तो this guy will move here and he will find himself as null, so prev will be here, so prev dot left will be pointing to 9. Yeah. Correct? अगर मुझे Yes, sir. कोई 12 चाहिए तो again same thing, prev will be pointing here and temp will be null, right, again I'll point 12 here. अब मुझे 11 करना है तो temp will be here, prev temp will be here and temp will go here, ठीक है, and then I realize that it should go left, so temp will go here, but prev will be pointing still here, and prev dot left, see, prev dot left will be equal to new value, that is 11. Don't you guys agree? Hello, Yes, sir. any doubt in this iterative approach? No, sir. But इसे हम recursively तो कर सकते हैं ना सर? कर सकते हैं वो, तुम like I'll be picking up the call, तुम लोग recursive function लिखो यहाँ पे, try this thing, अगर नहीं हो तो we'll come back and see recursion में you'll be taking a root and you'll be Yeah. taking a key, ठीक है, Key. try to write it in a recursive way, it will be returning a node, ठीक है, तो रिकर्सिवली एक बार सोचो कैसे करना है. सर इसमें अब हम ये ऐसे करेंगे कि रूट का अगर डेटा अगर लेस देन है हमारा की से तो राइट में शिफ्ट होंगे. बहुत Right सिंपल में है, recursive रूट call. सुनो, रूट रिकर्सिव इटरेटिव से बहुत सिंपल है, दैट इज द रीजन व्हिच आई एम लीविंग, ठीक है, अभी करो, 5 मिनट टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, ट्राई दिस, इट विल बी हेल्पफुल टू यू, ठीक है, आई विल कम बैक एंड विल कोड इट इन द एक्चुअल कंपाइलर, विल क्रिएट द ट्री. इज दैट फाइन गाइस? 5 मिनट्स ब्रेक, ठीक है, नॉट मोर देन दैट, ठीक है, ट्राई दिस. चलो, let me just pick up the call and I'll be back.
Hello? Hello, guys? Yeah. Are you back? Hello? Right. So basically, guys, okay. So most of you are correct. Okay. Okay. That is how it is going to be. Okay. If at all it is a null variable, then you will be just returning that as the key. Okay. Varna, what you will be doing is you will be just basically just checking कि root dot value हमारा जो root dot value है वो if at all this guy ठीक है is greater than the key मतलब जो वैल्यू मैं ढूंढना चाहता हूँ वो बड़ा है मतलब this guy is bigger than my key so I should go to left, right guys? I should go to left, correct? Because root dot value is greater than my key so I should go to left because I need to find the appropriate place. तो मुझे कुछ नहीं करना, root dot left equals to I'll call insert recursive same function for the left tree as the root. Key will be same, the root dot left will be different because you're calling it for the left subtree. ठीक है, यहाँ पे this guy will return the head, मतलब he will return the root, right? So you will just point it to the root dot left to it in this way. Agreed? Hello? Any doubts in this? ठीक है, वैसे same तुम else लिखो और you can write else if ठीक है, it is better सच बताऊं तो else if root dot value is less than the key, in that case you'll just write root dot right equals to insert recursively on root dot right comma key. सोचो कैसे, क्योंकि root this guy is less than the key value है ना, so this guy is less than the key value so I need to go to right part है ना, मतलब यहाँ पे अगर समझ लो 10 insert करना I need to go to right part so I'll just make root dot right equals to this thing so whatever the root here is that will be returned, okay? And you will make this thing point to this root dot right, ये जो भी head return करेगा he will just point it root dot right is equals to this, so at the end I'll just return root क्योंकि हमेशा root ही return करना है, हर एक function will be returning only root, right? Because previous functions might be waiting for it, correct? So this is the recursive code, it is much simpler than that code. देखो इसके बारे में. Hello guys, any doubts? I want to listen to doubts. Anyone is facing any difficulty, do let me know. क्या समझ में आया सबको? Root dot left should be root dot. So here I'm just saying कि ये left subtree में जो भी head है उसको return करना insert करने के बाद, ठीक है? और जैसे जैसे you'll go and you will be finding at a point, समझ लो मुझे कुछ और value insert करना है, right? या फिर मुझे 5 insert करना है. So he will call left, he will call left, he will also call left. यहाँ पे देख सकते हो कि वो null हो जाएगा. So यहाँ पे 5 बनेगा and then it will be returned. Since it is called as root left equals to this value, so you will be made in this way. फिर ये रिटर्न करेगा एंड ये इसको पॉइंट करेगा, ये रिटर्न करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा एंड एट द एंड यू विल बी रिटर्निंग दिस ओनली बट विद द इंसर्टेड नोड. एग्रीड? एक बार 5 के लिए सोचो, लेफ्ट कॉल होगा, लेफ्ट कॉल होगा, लेफ्ट कॉल होगा एंड नल पे आ गया, राइट? सो अ न्यू वैल्यू विल बी क्रिएटेड एंड देन इट विल बी रिटर्न. सिंस लेफ्ट कॉल हुआ था, रूट डॉट लेफ्ट इज इक्वल्स टू पॉइंटिंग हियर and again the same thing, root dot left will be pointing this thing, root dot left will be pointing this thing, and at the end you will be having this as the BST. Do you agree? Right? So if you want me to show it, correct? Okay. So if you want me to show it, okay, I'll just show you how practical this thing is. Okay, let me just take quickly and code it. Okay. Let me just take a GDB compiler. Right? And let me just quickly code it. Okay. Help करना थोड़ा अगर नहीं कर पाया तो, ठीक है? तो देखो, let me just create a class called binary search tree. Let me make a call called class called BST.
ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक तो मेरे पास एक नोड क्लास होना चाहिए जो नोड होता है, राइट? सो लेट मी जस्ट क्रिएट दैट फर्स्ट बिफोर दिस, ठीक है, int value, and you'll be having left and you'll be having right. Is this correct, guys? Any doubts in this? Any doubts in this node function? No, right? किसी को कोई डाउट है? करेक्ट? तो अभी देखो, I'll make it as public so that it will be it is a constructor, right? Now I'm making a BST class, ठीक है? BST class में क्या होने वाला है? एक तो root होगा, करेक्ट? और क्या होगा? बताओ यार, और क्या होने वाला है? ठीक है, एक वो होगा, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर होगा जो इनिशियली BST को कॉल करेगा विथ नो आर्ग्स, and it is going to be making root equals to null, है ना? करेक्ट? रूट लेफ्ट राइट वोंट बी देयर इन दिस पर्टिकुलर BST. यहाँ पे रूट होता है, ठीक है, रूट के अंदर लेफ्ट राइट होता है, जोशना, करेक्ट? अब देखो, अभी मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूँ void नाम से, इट इज इंसर्ट, ठीक है? दिस गाय विल जस्ट टेक अ की, ठीक है, he will just take a key and let me make this root as private because I don't want anyone to play with it, ठीक है? Only my methods will be playing with it, ठीक है? So what I'll be doing, I'll be writing root equals to insert recursively with the root as well as key. See, now I'm updating the root. Just see this. It's how beautiful it is. Okay, so let me write a insert recursive function which is taking basically a node as well as a key. Okay, now let me write the same thing which I wrote in the PPT, right? If at all root is null, in that case, I'll be creating a new node with a key value and return that root. Correct? Any doubts, guys, in this base case, right? If at all there is no tree, correct? I mean, in the initial case or doing the insertion, correct? But again, same thing. If root dot value is greater than the key, again, if root dot value is greater than the key, मतलब मेरा key छोटा है, मतलब मुझे left जाना चाहिए, right? So let me write root dot left equals to insert recursively root dot left, and the key will be passed. Correct? Any doubts in this? Hello? Else if I'll be writing root dot left is less than the key. In that case, take a root dot right is equals to insert recursively root dot right. ठीक है? So Ashish, we are creating a class of BST, right? So we can make an object of BST here. Are you getting it? ठीक है, तो यहाँ पे मेन क्लास के अंदर करना जरूरी नहीं है. मेन मतलब एक फाइल में देखो मेन डॉट जावा है, उसमें एक पब्लिक क्लास होगा और कितने भी नॉर्मल क्लासेस हो सकते हैं, ठीक है? सो y2 इंसर्शन फंक्शन, देखो भरत, ठीक है, लेट मी टेल यू y2 इंसर्शन फंक्शन, दिस इज द फंक्शन दैट इज अवेलेबल टू द पब्लिक, ठीक है? सो आई एम मेकिंग दिस फंक्शन एज प्राइवेट बिकॉज दिस इज व्हाट पीपल नो, राइट? मुझे क्या चीज पता है, मुझे बस एक वैल्यू के इंसर्ट करने बोलूंगा मैं बाहर से, है ना? मुझे रूट के बारे में नहीं पता, मुझे की के बारे में नहीं पता, ये सब इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है ना भरत? सो दिस गाय विल बी कॉलिंग हिम इंटरनली बिकॉज रूट का एक्सेस मेरे पास नहीं है. सो मुझे कुछ नहीं पता अंदर कैसे चल रहा है, बस मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ BST में, तो वो कैसे इंसर्ट होगा वो पूरा लॉजिक यहाँ पे लिखा रहेगा. करेक्ट? सो लेट मी राइट इट समवेयर लाइक दिस, ठीक है? अगर ऐसा है तो एट द एंड लेट मी रिटर्न द रूट. बस हो गया है कि नहीं? हो गया. अभी क्या करो, अभी मैं पता कैसे करूं कि सही से इंसर्ट हुआ कि नहीं, कोई बताओ कैसे करें? प्रिंट करूं, करेक्ट? कौन सा प्रिंट करो गाइस? व्हाट शैल आई प्रिंट?
why should I print in order? Why should I not print post order or pre order? In order करने का कुछ फायदा है क्या? Yes, फायदा है. In order करोगे, it will be left node and then right, correct? So it is nothing but left मतलब पूरा left का सबसे minimum elements मतलब recursively also it will be NLR. यहाँ पे भी NLR होगा. So at the end you will be getting a sorted answer. Do you agree, guys? है ना? तो इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ, राइट? सो इन ऑर्डर करने के लिए वापस मैं अपना यूजर को फोर्स नहीं करना चाहता कि रूट यूज करो. मैं आई विल बी जस्ट कॉलिंग अ रिकर्सिव फंक्शन व्हिच विल बी टेकिंग अ रूट, बस. क्योंकि रूट का एक्सेस है ही नहीं, ओनली एक ऑब्जेक्ट है बीएसटी का बाहर के लिए, ठीक है? सो लेट मी जस्ट हैव अ इन ऑर्डर रिकर्सिव कोड व्हिच विल बी टेकिंग अ नोड, right? And this guy, let me make it as private because I don't want anyone to use it. Okay, in order recursively, like let me write something like if root is not equals to null, only in that case you will be doing it. Okay, you will be just writing the in order recursive root dot left. Vanna, you will just print it. Okay, let me just print the value root dot value and let me just add it. बस हो गया. देखो, I can make this thing like this. उसके बाद जैसे print खत्म हो गया, I will print it in a different line, है ना? So let me do that as well. बस हो गया. Now let me run that. बस हो गया यार, देखो. Now keep on telling me the. Now let me just create an object of BST. BST equals to new BST. Is this the correct way to do it, guys? Hello? Just see this. This is BST, right? So let me mark it as BST only. So I've created an object of BST, right? So now let me insert one value that is 5. ठीक है? उसके बाद BST dot insert 7, right? Any values, you just name it, we can do it. ठीक है? कोई भी value. देखो कितना level of abstraction मिल गया हमको, right? So let me just have it as 6. Let me just have it as 15. Let me just have it as 10. Let me just have it as 4. Let me just have it as 3. Let me just have it as 2, right? And after 2-3 things, let me do the BST dot in order. Let me just print it. तुम देखो, like how I'll be printing it. After 3 values, let me print it. After this value, let me print it. After this value, let me print it. After this value, let me print it. ठीक है? After at the end, let me print it. ठीक है? In the initially also, let me print it. Let me run it. देखो यहाँ पे, right? Initially क्या हो रहा है? Initially कुछ नहीं था, right? So you just printed it, like couple of. So I think, guys, let me do this thing. ठीक है? Let me just write this thing here. कहाँ लिखो? यहाँ पे लिखो? I think it is a better thing. Oh shit. Let me write it here, na? Because after everything got printed, then I wanted to change the line. Correct? वरना बहुत सारे line फालतू में change हो रहा है, right? So you can see this thing. Initially, in order किया, nothing happened, right? ठीक है? उसके बाद 3 value insert किया, ठीक है? उसके बाद in order किया, you see that it is sorted, right? I've inserted one more value. Now you can see that it is sorted, right? Again, like I've inserted 10, it is sorted, right? Sorted का मतलब है it is in the way we want, correct? So जैसे चाहता हूं मैं insert हो वैसे ही हो रहा है insert. Are you able to see this, guys? Anyone has any doubt? Be specific about the doubt. Yeah, you can take the user input. You can do that. बहुत simple है वो, ठीक है?
तो इसके लिए तुम्हें बस स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाना होगा और पूछना होगा कि कौन सा वैल्यू इंसर्ट करूं, उसके बाद तुम्हें ये करना होगा कि प्रिंट करके दिखाना होगा, ऐसी कुछ, राइट? तो इंस्टेड ऑफ दिस थिंग, ठीक है, लेट मी जस्ट रिमूव ऑल दिस इन ऑर्डर थिंग्स, आई डोंट वांट टू एक्सप्लिसिटली कॉल, जैसे ऐड हुआ आई वांट टू मेक द प्रिंट थिंग हैपन, ठीक है? तो मैं जैसे इंसर्ट हो गया, ठीक है, इंसर्ट जैसे हो गया यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ, बस, इवन दिस थिंग विल वर्क, राइट? सो व्हाट इज द कोड? ठीक है, कोड में I've created a class of insert and I'm putting a key value. This thing will internally call a recursive function, ठीक है, which will insert a value inside the tree, ठीक है? So after that I'm printing the in order. How I'm printing the in order? The usual way, right? एक space देके मैं print कर रहा हूँ, right? तो in order हमें ये बताएगा कि वो BST है कि नहीं, right? And you can see that how this is working, right? तो initially अगर मैं कोई वैल्यू डाला वो 8 नया वैल्यू बन के आएगा, राइट? इट विल बी देयर अगेन व्हेन यू पुट अनदर वैल्यू, अगेन इट विल गो एंड ट्रैवर्स एंड इट विल जस्ट पुट अनदर वैल्यू हियर, इट विल पुट अनदर वैल्यू हियर, इन दैट वे, करेक्ट? तुम देख सकते हो कि हाउ वी आर डूइंग इट, ठीक है? तो तुम देख सकते हो कि like how the recursion will happen and how it will happen, and if you run an in-order traversal of this, okay, if you run an in-order traversal of this, it is going to be L and R, right? So यहाँ पे left, ठीक है, वहां पे वापस left, ठीक है, यहाँ पे left null है तो N, that is this value, right null है so nothing, left is done so this value 6, उसके बाद right पे आओ, फिर उसके बाद 11 left right, उसके बाद ये होगा, the whole left is done so then N, that is 8, ठीक है, and then it is 10, right? It is always in this way, ठीक है? पहले लेफ्ट होगा उसके बाद n होगा उसके बाद r होगा, it will be always in the sorted fashion if at all it's a BST, अगर वो BST है तो sorted है, करेक्ट? तो तुम देख सकते हो like how the insertion is happening, how we are printing it, ठीक है? These are the only two functions which you have written, right? You can see that the more you insert the values, ठीक है, you can see that every time after insertion, ठीक है, you are getting the tree as you wanted. Internally अगर मैं दिखा सकता हूँ तो 5 पहले ऐसे इंसर्ट होगा, उसके बाद 7 ऐसे पूछेगा, 7 यहाँ पे आएगा, उसके बाद 17 यहाँ पे आएगा, राइट? उसके बाद 6 is going to be at this position, right? Because 6 is greater than 5, but you'll go here and then you'll come to left, right? So 6 के बाद कौन सा वैल्यू ऐड हुआ? 10, right? So you will go here, right? But you should put it on the left part, right? उसके बाद 4 ऐड हुआ, 4 will be on the left part, right? And उसके बाद 3 will be on the left part, उसके बाद 2 it will be on this part, correct? So you can see that at the end हमारा BST ऐसे बनने वाला है, ऐसे बन चुकी है, अंदर ऐसे ही है. This is how everything is connected, all the nodes are connected, right? But when you are printing it, you are able to see it कि you're getting a sorted value because of this. हाँ, करेक्ट, you'll get a skewed binary tree, कुंदन, करेक्ट. हमने 5 लिया, उसके बाद 6 7 8 ऐसे ऐसे करता रहा, तो it will be a skewed binary tree ना, it's not a balanced binary tree anymore if at all I had done this thing. But right now it's kind of balanced tree. It's not balanced yet because यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे 2 है साइज, यहाँ पे 0, it's not balanced at this point, correct? तो यहाँ पे एक और वैल्यू होता, then you can call it as balanced binary search tree. यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे 4.5 हो सकता है, correct? Guys, any doubts? Just be very specific about your doubts. I can help you to resolve it. Dekho, just look at the beauty. Just look at the beauty, how everything is getting sorted. In what time? Every insertion is taking log n time. Correct? N values के लिए it is taking n log n time. Do you guys agree with this? तो sort हो रहा है ना values n log n time में. So don't you think it's another sorting algorithm? है ना? जिसके बारे में तुम लोग आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है? Right now ऐसे समझो, ऐसे अभी देखो इसको.
Any doubts, guys? Shall we move forward? You don't have to use BST constructor, कोई जरूरत नहीं है सच बताऊं तो चिराग, क्योंकि अभी तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, बस नल कर रहा हूँ ना उसको। सच बताऊं तो कोई जरूरत नहीं है BST कंस्ट्रक्टर का। देखो, there is no need of that, but if you want to then you can. देखो यार, अभी मैं एक और मेथड भी पॉपुलेट करना चाहिए, क्योंकि डिलीट भी तो करना चाहिए मुझे, बस इंसर्ट ही करता जाऊंगा, डिलीट कब करूंगा? I'll take one more time, like कुछ और पढ़ाऊंगा and then we can close the class, ठीक है? Is that fine with you guys? और थोड़ा ब्रेक चाहिए तुम लोग को, बताओ। Reni is asking कि login only if it is balanced, correct? Reni, only if it is balanced, only then you can call it as login time, वरना it will be more than login time unbalanced है तो, ठीक है? अगर skewed है तो big off है, somewhere between login and n होगा अगर unbalanced है तो। completely unbalanced अगर degenerate या skewed binary tree है, then it is bad, है ना? No, you don't have to, Bharat. Right? See, this is what how you insert it, ठीक है? जो हमारा पोर्टल पे है, even they're asking you to create a BST, ठीक है? They're not asking you to create a tree, ठीक है? So see, there's a level of automation which I've implied in this tree, right? हर कोई value है based on your कोई वैल्यू है बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस की लेफ्ट चाहिए मुझे राइट चाहिए, उसके हिसाब से मैंने कोड लिखा और वही कोड चल रहा है, राइट? देयर इज अ काइंड ऑफ ऑटोमेशन व्हिच आई ब्रॉट, ठीक है? लेकिन अगर तुम मैन्युअली कोई भी ट्री बनाने के लिए बोला तो उसको तो मैं मैन्युअली कर सकता हूँ ना। In case of in order we return null. If root is null, what is happening in that case? Nothing will happen. देखो, अगर root null है तो देखो ना यहाँ पे क्या हो रहा है, root null है तो ये चलेगा ही नहीं, like it will be over, इसलिए बस एक line skip print हो रहा है ना, correct? What if we want to delete that root? Great question, Bharat. So I'll be teaching that deletion again now, but I just want to show I just want you guys to be sure in insertion first. Is everyone perfectly fine with insertion? Then only I'll be going for the deletion and the BST. Guys, बताओ, किसी को कोई भी डाउट है अभी पूछ लो, मैं पूरा ही क्लियर कर दूंगा, ठीक है? कोई भी डाउट हो, like 40 people है अभी क्लास में, ठीक है? I'll personally take some time and clear you guys, ठीक है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, ठीक है? ये चीज पूछा जा सकता है, तुम्हें एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि बनाओ करके, लाइक क्रिएट अ BST एंड शो मी ब्रो, ऐसे पूछा जा सकता है, क्या करोगे? राइट? सो बी थॉरो विद दिस, ठीक है? कर दोगे ना? ओके अजय, आप बताओ, ठीक है? लेट अस कंसिडर अ ट्री, ठीक है? कोई ट्री है, यहाँ पे मैं 40 रखूंगा, यहाँ पे मैं 45 रखूंगा, यहाँ पे मैं 48 रखूंगा, यहाँ पे मैं 78 रखूंगा या 90 रखूंगा, यहाँ पे मैं 35 रखूंगा, राइट? सो माय क्वेश्चन टू यू, ठीक है? इफ आई वांट टू डिलीट 48, हाउ डू आई डू इट? Guys, how do I delete it?
इफ आई वांट टू डिलीट 48, पहले 48 को सर्च करना होगा, है ना। तो यहाँ पे आऊंगा, 48 छोटा है तो यहाँ पे आऊंगा, 48 बड़ा है, यहाँ पे आऊंगा, 48 बड़ा है, आई विल रीच एट दिस पॉइंट, ठीक है। अगर मैं आइटरेटिव जा रहा हूँ तो यहाँ पे प्रीवियस होगा, आई विल मेक प्रीवियस पॉइंट टू नल इंस्टेड ऑफ दिस। अगर मैं आइटरेटिव जा रहा हूँ, सो इफ एट ऑल आई फाउंड दैट वैल्यू रूट, ठीक है, रूट का वैल्यू फाइंड कर लिया, देन आई विल रिटर्न नल, ठीक है। एंड द सेम थिंग, द सेम कोड, यहाँ पे जो कोड लिखा हूं बस यहाँ पे रूट की जगह नल रिटर्न करूंगा मैं, और ये सब होता रहेगा। डोंट यू गाइस एग्री विद दैट स्टेटमेंट? हेलो, राइट। आइटरेटिव में you'll be using a previous variable, iterative में you'll just make root is equals to, you'll just check ki root is equals to the key or not. If at all it is equals to the key, you'll return null, so that the previous guy who has called will be getting a null from it and he will be pointing to null. Correct? Any doubts? If it's a leaf node, बहुत simple है, simply delete, simply remove, है ना। करेक्ट। इफ इट्स अ लीफ नोड कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलो फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन ये है कि नोड हैज वन चाइल्ड, एक ही चाइल्ड है। फॉर एग्जांपल लेट मी टेक एन एग्जांपल, ठीक है, लेट मी जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अनदर ट्री। एक और ट्री बनाऊंगा, सेम ट्री बनाऊंगा, 50 है, दिस गाय इज हैविंग 40, दिस गाय इज हैविंग 45, राइट, दिस गाय इज हैविंग 48, दिस गाय इज हैविंग 90। लीफ नोड का मतलब है नो चाइल्ड, है ना। अगर एक चाइल्ड है, ठीक है, उस केस में क्या करेंगे, जैसे कि इफ आई वांट टू डिलीट 40, सोचो, थोड़ा थोड़ा सोचो, 30 सेकंड्स दे रहा हूं। Right, guys, so what you'll do is you'll basically, ठीक है, what you'll do is you will kind of like if you want to delete 40, so you'll first search for 40, that is mandatory, ठीक है। फिर तुम्हें पता चला कि एक नल है और एक बंदा है उसके पास, ठीक है, एक चाइल्ड है, so you'll just do this person point directly to this, so it will be converted into 50, 45, 48 and then 90. Don't you think guys this will be deleted? अगर लेफ्ट भी होगा ना तब भी वो चलेगा, राइट। अगर if this guy has left child, I'll make this guy point to left child, ठीक है। anyway whatever it is greater or less than, it is always less than this particular value, so it is fine, that it is completely fine that we can point it. Do you guys agree? हेलो, क्योंकि अगर वो ज्यादा हो या कम हो, it is a binary search tree as well, right? If at all it is less or greater than, it should be always less than this particular parent, right? So you can directly do it. क्यों, है कि नहीं? हेलो, राइट। सो अगर एक चाइल्ड है, ठीक है, पॉइंट द चाइल्ड इन इट्स प्लेस, पुट द चाइल्ड इन इट्स प्लेस। अब देखो, अभी सबसे इंटरेस्टिंग केस, नोड हैज 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन है इसका मतलब, समझ लो जैसे कि 50 है, you have something called 40, you have something called 70, you have something called 60, you have something called 80. Now I want to delete, which one I want to delete, tell me. I want to delete 50, delete 50, ठीक है। हाँ, confusion नहीं, it's fine, ठीक है। So if I want to delete 50, but I want to retain the BST properties, है ना,
तो क्या करूंगा मैं, दैट इज द क्वेश्चन। ध्यान से सोचो, एक बार ध्यान से सुनना, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आ गया? करेक्ट। यू कांट लिंक इट इन दैट वे चिराग, ठीक है? क्योंकि यू आर नॉट श्योर कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है ना? यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट थिंग, ठीक है? सो सुनो सुनो, मेरे से सुनो, लिसन टू मी। डोंट रिमूव एनीथिंग। इफ यू रिमूव एनीथिंग इट विल कॉज सम प्रॉब्लम्स, ठीक है? अगर तुम्हें लग रहा है कि अगर मैं 70 को इसकी जगह रख दूंगा तो तुम देख सकते हो कि 60 का जाएगा, पहली चीज, और 70 इस तरफ है तो लाइक 60 शुड नॉट बी देयर, करेक्ट? सो यू शुड थिंक अबाउट दिस थिंग अ लिटिल, ठीक है? सो मैं मैं 50 को डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है? तो लाइक आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब द प्रॉपर्टी ऑफ BST, करेक्ट? सो right, so what I'll be doing is I'll be developing a concept called inordered successor. Listen to this carefully. Inordered successor का मतलब है अगर तुम inordered traversal करोगे, ठीक है? इसका inordered traversal क्या होने वाला है? 40, 50, 60, 70, 80, right? The inorder इस वैल्यू को डिलीट करना है, इसका सक्सेसर क्या है? ये प्रेडिसेसर है, ये सक्सेसर है, राइट? सो inordered successor is next greater value in BST, ठीक है? I'll just take inorder successor, ठीक है? And I'll replace that, ठीक है? यहाँ पे inorder successor 60 है, right? So how do you find the inorder successor? कुछ नहीं है, ठीक है? तुम यहाँ पे समझ लो 55 ही हो, ठीक है? What you'll do is you'll basically go to right part, ठीक है? And then you'll keep on going to the left part. So this will be the inorder successor, correct? Right? So why this thing will work? See, you're going to write, मतलब you're trying to find a greater value, ठीक है? और उसका सबसे छोटा वैल्यू, सबसे लेफ्ट मतलब सबसे छोटा वैल्यू, राइट? The most left value will be the smallest value in the BST. Do you guys agree? है ना? सबसे छोटा वैल्यू is nothing but the सबसे left value in the BST, right? So what I'll do is I'll find this value, ठीक है? I will replace this value with this value 55. Wait. Now I'll delete this value because it's going to be a leaf node, or it might be a node with single child, but it's fine, okay? You can delete it. You know how to delete it. The point here I'm trying to convey is कि the person who is the least, okay, least value in right subtree, okay? So if I replace this particular person with this, okay, anyway this person is greater than this, so all the left values will be less than this value. Do you agree? And this is the least value in the right subtree, so all the remaining values will be anyway greater than this. So do you think am I violating any property of the BST, guys? Let me repeat that statement, okay? Right, so see this, I am choosing the least value in the right subtree, okay, or I am replacing that value with the parent value, okay? How do I find it? I'll go to right subtree and then I'll go to the leftmost value, है ना? ठीक है, वो तो ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि this value is the least value in the whole right subtree. तो अगर मैं इसको यहाँ पे रख दिया तो all the other values will be on the right subtree only, right? So this will not violate any property because all these values are greater than this value. So right subtree में सब values greater होना चाहिए, तो if I replace it, it's full. Agreed? Right? और उसके बाद anyway, like this guy is for the right subtree, so he will be anyway greater than this value. So that is what I want, right? This value, I want this value to be the least value out of, I mean, this value is lesser than all the values that are remaining in the right subtree, correct? Because this is the least value of the right subtree. So if I replace this value with this value, it won't violate BST property.
सोचो थोड़ी देर के लिए, राइट से क्या बोलना चाहता हूँ मैं। I've chosen in order successor, which is the next greater element than this guy, and I'm replacing that guy with this guy. Okay, and okay, and this value can never have two children. It can only have one children or zero children, right? So replacing this value with this will not violate many of the property, because all the values on the right subtree will still be greater than this value, and all the values on the right left subtree will anyway greater than this value, because it is the from the right subtree, right? It is greater than the parent node only, so they will be greater than all the values, correct? You won't delete, okay? So the 70 के लिए भी same चीज है, you'll be choosing the in order successor, ठीक है? अगर 70 को डिलीट करना चाहता हूँ, चलो सेम चीज लिख रहा हूँ मैं, ठीक है? What is that? It is going to be 40, it is going to be 70, it is going to be 60, है ना? It is going to be 55, and it is going to be 80, right? So if I want to delete 70, I'll just try to find what is the in order successor of 70. It is 80, right? So I'll replace this with 80, and then I'll delete 80. बस हो गया। In order successor find करो बस। In order successor, replace it with node, है ना? Replace it with node and delete it. Delete the in order successor. Again same call करो, in order successor delete हो जाएगा। Same function call करो, doesn't matter if it has one child or two child, correct? Any more doubts? Any doubts? For example, please add 58 and then delete 55. Okay, sure. चलो देखते हैं क्या करें। तो एक और ट्री लेने के लिए बोल रहा है तुम लोग। Okay, let me take another tree. This is 50. This is having 70. ठीक है? For example, if you have 60, ठीक है? You will be having 58 here. Sorry, 58 will be here, yeah. And समझ लो यहाँ पे 62 है, ठीक है? And यहाँ पे 80 है, and 80 का you will be having 75, ठीक है? Now let me just want to delete 70 now. Again, I'll try to find what is the in order successor. In order successor 75 है. Right tree का leftmost value, that is this value, correct? तो इसको मैं इससे replace कर दूंगा, and इसको delete करने में 100 पे निकलूंगा, and it will be deleted. It is still working. बस मुझे in order successor करना है, right? So okay, in this tree add 58, 59. 59 कहाँ ऐड हो गया यार तुम लोग? अच्छा यहाँ पे, and then delete 58. What are you trying to say? Add 65, ठीक है? And then delete 50. कंफ्यूज कर रहे हो तुम लोगों को। कौन सा, लाइक एक क्वेश्चन दो, लाइक एक पर्सन अभी मुझे बताओ कौन सा ऐड करो इस ट्री में, कौन सा ट्री बताओ, या हैंड रेस करो और एक ट्री बताओ, या हैंड रेस करो तुम लोग। बहुत लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, जस्ट हैंड रेस एनीवन एंड आस्क मी अ क्वेश्चन, आई विल डील विद इट। भरत आंसर करो। हाँ भरत को अनम्यूट कर रहा हूँ, बताओ यार एक ट्री बताओ, एक ट्री बनाओ मेरे से, बनवाओ। ओके 50 फिर 45 45 will be on the left part, correct? 50 35 35 will be here. 47
47 will be here, 60 60 will be here, and 55 55 will be, देखो, will be here, correct? and 57 57 will be here. हाँ, क्या बनवाया तुमने ये? delete 50 If you want to delete 50, ठीक है, what will happen? ठीक है, I want to find the in order successor, right? So what is the in order successor here? It is right subtree का leftmost value, that is 55. Do you agree? भरत अनम्यूट हो गया क्या? म्यूट हो गया क्या? हाँ भरत, हेलो. yes sir 55 is the in order successor. Do you agree? yes sir So I'll just replace this value with 55, ठीक है, and I'll go into my next right subtree to delete 55. This is another recursion call. 55 delete करो, कैसे करोगे? Like यहाँ पे आओ, ये single node है तो इसको इससे point करा दो, हो गया ना? Like you know how to delete a node with single single node, right? Single child, right? So Oh, 60 yes, will be sir. pointing to 70. This will be deleted. The left node है, yes, समझा? yes sir You will be calling this function again to find this 55. Bas. Someone is saying, can I do this question with in order predecessor as well? Bharat, tell me. yes sir In order predecessor मतलब मैं 55 को replace करने की जगह 47 47 को replace करूं, क्या काम करेगा वो? yes sir करेगा काम करेगा, because this guy is the greatest, ठीक है, greatest value of left subtree, है ना? In order successor मतलब least value of right subtree. बस हो गया यार, राइट सब ट्री, लीस्ट सब ट्री, बस प्रिडेसेसर मिल गया, ठीक है. तो इसको 47 को रिप्लेस करो और यू कैन सी द 47 इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द लेफ्ट सब ट्री. So replacing this guy won't make any difference because all these values are less than that value, correct? The same thing will go here, as these guys are anyway greater than this left subtree, so you can replace it easily. Agreed? yes है ना? so फिर greater मतलब greater value select करना है या less value select करना है, मतलब left side से select करना है या right side? कुछ भी चलेगा, लेकिन जो like अगर if you choose in order successor, you should search for that 55 and delete in the right subtree. अगर तुम predecessor का choose किया तो उस left subtree में कॉल करके delete करना होगा, बस ये डिफरेंस है. okay किसी और को ट्राई करना है? Any other tree you want me to clear? अगर if at all it's not clear with Bharat, ठीक है, if you want me to clear with that particular thing, बताओ. Guys, I'll code it, ठीक है. It's simple. कोड करना इतना मुश्किल नहीं है. बस कोड करना मुश्किल इसीलिए नहीं है क्योंकि I know how to break this code into smaller sections. छोटा छोटा करके मैं पूरा कोड कर लूंगा, ठीक है. As a whole, if you see, it might look like very difficult thing, ठीक है, लेकिन तुम छोटा छोटा करो. पहले तुम just think about single node, मतलब leaf node. उसके बाद do it for the one child. उसके बाद do it for the two child, है ना? वैसे वैसे करके I can break it down and I can do it. ठीक है guys, shall I code it or do you need some time, 5 minutes time to try and code it on your own, which I prefer? Delete 60. Okay, so in which code you want me to delete 60? Can you unmute and tell me the tree? क्योंकि यहाँ पे tree already कचरा बन चुका है, right? So tell me which node you want. तो एक बार unmute करो और बताओ क्या करें. Hand raise your hand and let me know. Anyone, any tree. कोई tree बताओ मुझे यार, ये already delete हो चुका है ना.
लाइक आगे इस पर करूंगा तो कंफ्यूजन होगा क्योंकि 50 ऑलरेडी 55 ऑलरेडी नहीं है। तो 60 को डिलीट करना क्या है यार, 60 इज अ नोड विद सिंगल चाइल्ड राइट। तो सिंगल चाइल्ड का क्या हो गया, इफ यू वांट टू डिलीट इट तो ये इसको पॉइंट करा दो इससे, 55 को मेक इट पॉइंट टू 50 57 ब्रो, सीरियसली सिंगल नोड है ना। सो आई गिव यू गाइस 5 मिनट्स, ठीक है, ट्राई टू थिंक हाउ टू कोड, एक बार कोड को पीस पीस करके एक बार सोचो कैसे कोड करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आऊंगा, ठीक है, आई विल बी जस्ट मतलब आई विल बी जस्ट सीइंग हियर, तुम लोग का चैट देखूंगा एंड आई जस्ट वांट टू सी के हाउ यू आर थिंकिंग, ठीक है, एंड ट्राई टू डू इट, ठीक है। उसके बाद आई विल कोड एंड देन वी कैन एंड द क्लास फॉर टुडे, इट्स सफिशिएंट, काफी सीख लिया हमने, ठीक है। एंड यू कैन हैव योर दिवाली ब्रेक, ठीक है। सो बस एक बार सोचो कैसे करें, 3 पार्ट है इधर, एक लीफ चाइल्ड के लिए, एक सिंगल चाइल्ड के लिए, एक 2 चाइल्ड के लिए, ठीक है। So 2 child का थोड़ा different है because you are need to do this thing in order successor as well. बस try to code it. तुम लोग I'm sure that you guys will easily do it these 2 things. इसमें थोड़ा गर्मी लगेगी लेकिन that's nice. I don't think there are any other topics. ठीक है, this is what we are covering. There are definitely many questions you can do. ठीक है, like least common ancestor का question कर सकते हो. ठीक है, all such questions, but we'll do it after the Diwali break. ठीक है. So right now, try to do it 5 minutes for you guys, and then I'll come back and then I'll code and then I'll show you. Yes, you can use in order successor or you can use in order predecessor. Anything is fine. Again, the way you implement will be different because in order successor ke liye, you should be going to the leftmost node of the right subtree. In order predecessor ke liye, you should be going to the rightmost node of the left subtree. Is that cool, Yashwin? वो डिफरेंस होता है, बस बाकी सब सेम है। 5 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई टू कोड, नहीं हो पाया हम करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। डोंट लीव द क्लास, ठीक है, 41 स्ट्रेंथ है, डोंट लीव द क्लास, ठीक है, ट्राई इट, ठीक है, यू गाइस कैन डू इट, ठीक है, कर सकते हो तुम लोग। जीडीबी लो, जीडी में जाके एक बार ट्राई करो कैसे करना है, एक बार डिफिकल्टी फेस करोगे तब मैं क्लियर करूंगा, इट विल बी मच क्लियर, ठीक है। 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स।
एनी अपडेट्स गाइस? कुछ सोच पाए, कर पाए? हेलो हेलो गाइस, गाइस नो, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है हम करेंगे, ठीक है। सो देखो यार, बस हो गया, ठीक है। डोंट लीव द क्लास, दिस इज द लास्ट थिंग आई एम गोइंग टू टीच, ठीक है। सो लेट्स अज्यूम आई एम राइटिंग अ डिलीट रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है, ध्यान से सुनना। This will take a root and this will take a key that which I am going to delete, ठीक है। Clear for everyone? Any doubts here? Any doubts here? No, right? So देखो, पहला चीज कि null वाला check कर लेना, right? If at all it's null, then like you don't have anything to delete, so you can return null, ठीक है। So that is the first condition, ठीक है। So now what I can think is key again, the searching part will be anyway there, right? You want to search it, right? So that part is anyway there, ठीक है। रूट डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन द की, मतलब जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन द की, मतलब आई शुड गो टू द लेफ्ट पार्ट, करेक्ट। सो इट इज गोइंग टू बी रूट डॉट लेफ्ट इज इक्वल्स टू डिलीट रिकर्सिव रूट डॉट लेफ्ट and then the key, right? Same thing goes here, right? It will be else if root dot value is greater than the key, ठीक है। Same thing, I'll just call the same function on its right subtree, क्योंकि sorry ये तो कम होना चाहिए ना। So if at all this guy is less than the key, in that case I need to go to the right part, correct guys? Right, okay, so I'll call this, ठीक है। Now comes the most important section कि if I found that value, उसी value को मुझे delete करना है, correct? So in the else condition is what I am searching for. We found that value, correct? अभी देखो, अभी मेरे को एक्चुअल कोड लिखना बाकी है, ठीक है। अब सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसे कोड लिखने वाला हूँ जो तुम लोग को अच्छा लगेगा, ठीक है। So if you have value like 5 and then 4 and you have null here, correct? And then let us assume you have another value like 5 and then 6 and then null here. And then let us assume you have another condition where both of them are null, ठीक है, ठीक है। So in this case, what do you think you should do? ठीक है, if you found 5, मुझे 5 ही delete करना है, right? So in this case, you should, because someone has called you, you should return null. Do you guys agree? Guys, right? This is no child condition. इस केस में I should be returning 4 to them, क्योंकि कोई कॉल किया, I should make him point to this, क्योंकि he will be pointed right wherever it is called, correct? इस केस में I should be making them return 6, correct? Agreed, guys? So if I write a statement like this, if root dot left is equal to null, return root dot right, ठीक है। Else if root dot right is equal to null, root dot left, अब बताओ guys, ठीक है, अब बताओ, ठीक है। After this case, ठीक है, which is the case that is only left? Can you guys tell me? After writing these 4 statements, do these 4 statements cover all these 3 conditions? Is what I'm asking. Hello? Yes, it is covering all the conditions. एक बार सोचो, ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि ये दो कंडीशन, बस ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट दीज 2 कंडीशंस आर आल्सो सेटिस्फाइंग दिस वन। एक बार सोचो ध्यान से, ठीक है। इफ बोथ ऑफ देम आर नल, ठीक है, सो लेफ्ट विल बी नल, राइट? सो राइट इज आल्सो नल, देन आई विल बी रिटर्निंग नल वैल्यू। डोंट यू थिंक यहाँ पे नल ही तो रिटर्न हो रहा है?
हाउ कूल इज दिस थिंग गाइस? लेकिन अगर लेफ्ट नल नहीं है, राइट नल है, ठीक है, इन दैट केस यू विल बी रिटर्निंग रूट डॉट लेफ्ट. अगर दोनों ही नल है, इवन इन दैट केस यू विल बी रिटर्निंग नल, राइट? If both are null, ठीक है, you will be getting null only. You can see if left both are null, then root dot left will be anyway null. So you will be returning root dot right, which is null. So everything will be null. Don't you agree? Hello, guys. How cool is this, man? Any doubts, guys? किसी को भी? All the 41 students, right? So you covered all the no children वाला case cover कर दिया. You can write it, ठीक है, तुम लिख सकते हो कि root dot left is also null, root dot right is also null, then return null. You can write it. That is one more statement. But without that, I wrote it. ठीक है, single child वाला भी case cover कर दिया. Only thing that is left is else part, where you have two childs. Correct? This is where things will get interesting. क्योंकि यहाँ पे no childs, I mean two childs है. Correct, guys? यहाँ पे two childs है. Correct? हेलो, अभी सुनना, ध्यान से सुनो. यही चीज तुम्हें लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है. तुम देखो, लाइक आई टोल्ड दिस थिंग फ्रॉम द लास्ट हाफ एन आवर एंड आई ब्रोक दिस डाउन इन सच अ ग्रेट लेवल. जस्ट सी, पहले मुझे आंसर फाइंड करना है, जैसे मिल गया तो मुझे बस उसको पॉइंट करना. हाउ सिंपल इज दिस थिंग, द वे विच आई एक्सप्लेन एंड कोड. देखो कितना ज्यादा सिंपल लग रहा है तुम्हें, राइट? लेकिन इवन दिस गाय इज सो सिंपल. जस्ट सी, मुझे क्या करना है, इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, मतलब इन ऑर्डर सक्सेसर, मतलब मिनिमम वैल्यू इन इट्स राइट सब ट्री फाइंड करना है. मिनिमम वैल्यू इन इट्स राइट सब ट्री फाइंड करना है एंड आई शुड मेक दिस वैल्यू दैट वैल्यू. उसके बाद उसको डिलीट करना है, बस हो गया, सिंपल. ठीक है, तो रूट डॉट वैल्यू को अपडेट करना होगा विद द मिनिमम वैल्यू ऑफ रूट डॉट राइट. रूट डॉट राइट का सबसे मिनिमम वैल्यू आई वांट टू find. I need to update my root dot value with that value. Correct, guys? Is this making sense? Hello? Right. उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद रूट डॉट राइट वापस राइट से ट्रैवर्स करना ना, is equal to delete recursive. I am calling the recursive function again with root dot right as well as root dot value, क्योंकि root dot value is the minimum value right now. ठीक है, तो इस वैल्यू को मैं root dot right सब ट्री से डिलीट करके मैं I want to move forward. बस हो गया, this is the code. बस इतना ही है. बस एक और चीज है कि how to I need to implement this one which is very cakewalk for me. अगर तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, यू हैव अ रूट हियर, यू हैव दिस रूट डॉट राइट, है ना, इसका सबसे मिनिमम वैल्यू ये x है, ये y है, ये z है एंड ये a है. सो आई नीड टू फाइंड z, आई नीड टू अपडेट x विद z एंड आई एम कॉलिंग डिलीट रिकर्सिव हियर इन द सर्च ऑफ z. ठीक है, फाइंड z एंड डिलीट z, है ना. आई डिलीट z whatever. If this guy is having some other value, even then it is doesn't matter. I'm calling it recursively. Correct? Any doubts, guys, till now? उसके बाद at the end I'll return root. बस हो गया, यही है. This much. Just see how simplified I made it. Like जो चीज तुम्हें दिख रहा है कि बहुत मुश्किल है, like you break it down to smaller and smaller pieces. You can code it easily. ठीक है. So what I'm doing, let me repeat it. ठीक है, रूट डॉट वैल्यू को मैं अपडेट कर रहा हूँ विद द मिनिमम वैल्यू ऑफ द रूट डॉट राइट, मतलब उसका राइट सब ट्री का सबसे मिनिमम वैल्यू फाइंड करके आई एम जस्ट अपडेटिंग दैट विद माय करंट रूट डॉट वैल्यू एंड देन आई एम मेकिंग रूट डॉट राइट इक्वल्स टू डिलीट रिकर्सिवली द रूट डॉट राइट विद दिस वैल्यू, द वैल्यू व्हिच आई फाउंड. मतलब आई एम ट्राइंग टू डिलीट इन ऑर्डर सक्सेसर डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट. मतलब मैं z को डिलीट करना चाहता हूँ.
So I'm calling the delete recursive function जो पहले call कर रहे थे हम to delete a key value, calling the same function to delete root dot value, that is क्योंकि अपडेट हो चुका है root dot value, the minimum value को delete करने के लिए निकला हूं मैं. Let me implement minimum value again. ठीक है, तो इस बार it will be much clear. ठीक है, let me do it here. Int minimum value, ये कुछ नहीं करेगा, ये बस ट्री का नोड लेगा and he will just try to find the minimum value, that is root dot value right now. ठीक है, and I'll keep on going to the left करता जाऊंगा. If root dot left is not equals to null, ठीक है, तब तक I'll keep on going to the left value. Minimum value equals to root dot left dot value. Root equals to root dot left. ठीक है, and then I'll return minimum value. बस just look at the beauty. ठीक है, कोई वैल्यू है सिर्फ 1, ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, राइट, यहाँ पे कुछ और हो सकता है, 0.5 हो सकता है, यहाँ पे 2 हो सकता है, राइट. यू आर एट दिस पोजीशन, ठीक है, मिनिमम वैल्यू इसको ही माना, ठीक है, मिनिमम वैल्यू 1 है, राइट. तो रूट डॉट लेफ्ट इज नॉट नल, तो आई मेक दिस एज द मिनिमम वैल्यू 10, रूट डॉट मिनिमम वैल्यू, रूट यहाँ पे है, रूट डॉट लेफ्ट इज नॉट नल, सो आई मेक दिस एज मिनिमम वैल्यू, and at the end I'll be reaching the minimum value, that is the leftmost node of the tree. Okay, I'm using the same function and calling minimum value of root dot right, so that I'll be getting the root value, and then I'll be deleting that value. We are storing the address of the node and then making it root. No. What? Sorry, Bharat. We are getting the minimum value from the right subtree and then making it point to that. Okay? And then I'm calling the same function on the right subtree to delete that root dot value. This is the code. This is the whole code to delete 0 nodes. So this is the code to delete 1 node. This is the code to delete 2 nodes as 2 children as well. Just look how beautiful is this. Guys. Hello? किसी को कोई डाउट है अभी पूछ लो यार. We are ending the class ना. किसी को डाउट ही नहीं है. कोई भी डाउट है अप्रिशिएटेड कि तुम लोग पूछ रहे हो. राइट, सिंपल है ना. देखो, लाइक इफ यू ब्रेक इट डाउन टू स्मॉलर प्रॉब्लम्स बहुत सिंपल हो जाएगा. ठीक है, अगर तुम ऊपर देखोगे, लाइक बहुत बड़ा देखोगे, देन यू माइट बी फीलिंग कि क्या है ये बहुत बड़ा करके, राइट. बट अगर इफ यू लुक एट इट इन अ वेरी स्मॉलर वे, ठीक है, मतलब एक एक पीस बाय पीस करोगे तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट वन. ठीक है, राइट. तो आइटरेटिवली भी कर सकते हो, नॉट अ बिग डील. ठीक है, तो बस आइटरेटिवली क्या करोगे, तुम बस फाइंड करोगे इसको और डिलीट करते जाओगे ना. were we connecting left child node to the root node, new node. देखो यार कैसे कर रहे हैं हम. ठीक है, और देख लो कोड, how we are doing this part is once we found that node, अगर वो उसका सिंगल चाइल्ड है या नो चाइल्ड है, देन दिस कोड. अगर 2 चाइल्ड्स है, देन दिस कोड. ठीक है, इस कोड में मिनिमम वैल्यू फाइंड करके वी आर असाइनिंग दैट एंड वी आर ट्राइंग टू डिलीट दैट मिनिमम वैल्यू, क्योंकि वो मिनिमम वैल्यू हमको नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने उसको ऊपर रख दिया, राइट. सो दैट इज अबाउट BST, इंसर्शन इन BST, डिलीशन इन BST, ऑल द टाइप ऑफ नोड्स के लिए. Any doubts? I'm ending the class. ठीक है, if there are no doubts. ठीक है मैन, ग्रेट. ठीक है,
हैप्पी दिवाली गाइस, यू गाइस आर रियली ग्रेट, लास्ट तक तुम लोग रहे थे इवन दो द क्लास गॉट एक्सटेंडेड अ लॉट, ठीक है। हैप्पी दिवाली, हैव अ सेफ दिवाली एंड ठीक है। जैसे बचपन में जितना ज्यादा वो होता था ना एक्साइटमेंट, वो नहीं है अभी दिवाली के लिए। बचपन में लाइक 1 मंथ बिफोर से वी यूज्ड टू काउंट कि दिवाली आ रहा है, दिवाली आ रहा है ना। अभी तो ऐसा नहीं है, बट स्टिल मैन इट इट फील्स नाइस। मतलब पहले एक्साइटमेंट नहीं होगा लेकिन दिवाली के दिन तो अच्छा लगता है, ठीक है। सो ठीक है, थोड़ा एंजॉय कर लो, कंप्लीटली मत छोड़ना पढ़ाई, थोड़ा बहुत कर लेना कभी कभी टाइम मिलता है तो, ठीक है। दिवाली असाइनमेंट करना, विल हैव अ ग्रेट डिस्कशन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एंड या bye for now. We'll discuss more questions on trees. Trees is not done completely. I'll put everything which we learned today in the chat, okay, and in that thing I'll send the documents as well, ठीक है। PPT भी भेज दूंगा, doc भी डाल दूंगा, ठीक है। No worries, ठीक है। Okay man, good night, bye bye, bye bye। हाँ गुड नाइट नहीं, ठीक है, गुड इवनिंग जो भी है, ठीक है, बाय बाय। मैं थोड़ा गेमिंग करूंगा। विराट कोहली अभी अब तक चल रहा है क्या मैच? मैं देखने जाऊंगा। कहाँ पे है? हॉटस्टार में मिलेगा ना मैच गाइस? मैं करता हूँ, रुको हॉटस्टार खोलता हूँ। चलो मैम, बाय बाय, मैच देख लो। इधर ही दिखा दे, रिकॉर्डिंग अपलोड कर दे। लॉल, लेट्स सी। रुको मुझे पहले ये सब डालना होगा, ठीक है, तुम्हारे डॉक में, ठीक है, उसके बाद देखते हैं। चलो डिस्कॉर्ड में तुम लोग शेयर कर लो, ठीक है, डिस्कॉर्ड में आई कैन कम इफ यू वांट, डू लेट मी नो। बाय बाय।